Ciao, ciao, दोस्तों. We are live finally, and Yogesh, we are back after a while. बहुत टाइम के बाद, of course, a bit of off season going on. Of course, बहुत कुछ चल रहा है. In general, all of us have been very busy. सबका कुछ ना कुछ काम related reason चल रहा है, so we have not been able to stream for a while. Obviously, the last video we dropped was my reaction to Inter's Champions League final loss and generally Simone Inzaghi and everyone leaving, but जनरली योगेश अदरवाइज कैसा चल रहा है तेरा? सब ठीक? यू हैव रिटर्न टू द पॉडकास्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. कैसा है? बस बस बढ़िया चल रहा है. गोइंग गुड. नापोली इज आल्सो डूइंग क्वाइट गुड. कैंपियोने डी इटालिया है तो हाँ, आई एम वो तो स्टिल इन दैट सेलिब्रिटी मूड. ऑफ कोर्स यू शुड एंजॉय इट व्हाइल द गुड डेज लास्ट, बिकॉज पता नहीं यार फुटबॉल में आजकल क्या क्या होते रहता है, राइट? यू नेवर नो. एंड ऑब्वियसली आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू 2K, योगेश. मतलब 1.91K subscribers cross, so I hope only people who are watching please do like, share and subscribe and spread the word. We are planning basically अगले सीजन के लिए, और just in between we have started planning a lot. End of the season awards का stream भी mostly होगा very soon before we start the content for next season. तो please do spread the word. Let's keep growing together, and there's a lot in the pipeline. Once we all get free थोड़ा तब content आता रहेगा. Let me see first, Yogesh, the who else is in the house. Abhijay is always here, always trolling. RS says ciao ciao. Atletico Madrid, yes, ये retro है 2001 2002 टू सीजन का, with Fernando Torres at the back. वो तो वैसे भी मैं बहुत सारे अलग अलग क्लब्स के जर्सीज पहनते रहता है. केविन डे ब्रुयना, यस, इसके बारे में बात करेंगे. केविन डे ब्रुयना, मॉड्रिच, there's a lot. Even Edin Dzeko probably returning to Serie A. उसका तो बैटल चल रहा है. Bologna, Fiorentina, both clubs, rival clubs going for Edin Dzeko. योगेश भाई is Angisa extending also. Billing loan का क्या हो रहा है? We'll discuss all this in a section at once. But योगेश, initially थोड़ा just brief chat करते हैं यार. ट्रांसफर मर्कातो एज यूजुअल चालू हो गया. आई मीन पहले ही चालू हो गया. आई मीन कभी बंद नहीं होता है, ऑनेस्टली, लेट्स बी ऑनेस्ट. पर अभी क्लब वर्ल्ड कप के लिए एक स्पेशल विंडो भी खुला था. ऑब्वियसली 10 दिन का विंडो था जिसमें आप प्लेयर्स को रजिस्टर कर सकते थे, ये वो, ऑब्वियसली फॉर द क्लब्स प्लेइंग इन द क्लब वर्ल्ड कप. बट जनरली क्या लग रहा है इस टाइम सेरिया में, स्पेशली मैनेजर वाइज बहुत कुछ हुआ है. अभी प्लेयर्स के लिए तो स्टार्ट होगा, बट मैनेजर वाइज बहुत कुछ हो रहा है, हो चुका है. क्या लग रहा है तुझे? लग रहा है एक और अनदर काइंड ऑफ क्रेजी सेशन होगा, लाइक इट हैज बीन ऑल दीस इयर्स, या थोड़ा क्वाइट मार्केट लगता है तुझे इटालियन क्लब्स के लिए? नो यार, मैनेजर्स का मेरी गो राउंड तो स्टार्ट हो गया है. एंड स्टार्टिंग विद नॉट जस्ट इटालियन क्लब्स, लाइक इटली नेशनल टीम में भी बहुत सीन हो रहे वो तो हैं. हाँ, वो तो भाई, वो तो अलग ही है. उस पे आएंगे बड़ा को. तो लाइक मैनेजर मेरी गो राउंड स्टार्ट हो गया, लाइक तो that will be very interesting to watch out. And क्लब वर्ल्ड कप भी स्टार्ट होने वाला है, आई गेस फ्रॉम टुनाइट और हाँ, टुनाइट होंगे. सुबह को, सुबह 5:30 बजे का किक ऑफ है. अल अर्ली ऑफ इजिप्ट वर्सेस इंटर मायामी. एंड ऑफ कोर्स जस्ट बिफोर यू कंटिन्यू, मतलब फीफा ने बहुत बैडली हैंडल किया, स्टार्टिंग में एक्सपेंसिव टिकट प्राइसेस. याद है तुझे, इनके पास स्पॉन्सर्स भी नहीं थे, सो द टर्नआउट इज गोइंग टू बी वेरी बैड इन ऑलमोस्ट ऑल गेम्स, Yeah. अटेंडेंस वाइज. बढ़िया, गो अहेड योगेश. या एंड कौन से चैनल पे आने वाला है वो मुझे भी नहीं पता आई यार थिंक लोगों. डज़ोन का यूट्यूब चैनल पे फ्री होने वाला है, राइट? इफ यू गाइस कैन कंफर्म इन द कमेंट्स, आप लोग अगर मुझे बताओ. डज़ोन का यूट्यूब पे इस पे फ्री में दिखने वाला है, और व्हाटएवर इट इज. बढ़िया, गो अहेड योगेश. या तो यही सब है, लाइक इंटरनेशनल फुटबॉल चालू था लाइक पास्ट 2 वीक्स में, तो उसमें भी थोड़ा सा इटली का मैचेस देख के बहुत मजा तो नहीं आया. या ऑफ कोर्स, मतलब क्या फिर से वर्ल्ड कप मिस करने के लगता है विश लिस्ट बनाई है इटली ने. बढ़िया. आई थिंक तू बराबर बोला कि मतलब ऑब्वियसली वी नो मेरी गो राउंड वाइज कोचिंग का तो बहुत ही चल रहा है. आई मीन सी, इट्स क्वाइट स्ट्रेंज. जब तुझे याद है स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे, तब ऐसा हमने बोला था सिर्फ दो क्लब की स्टेबिलिटी गारंटीड थी उस पॉइंट पे जब सीजन खत्म हो रहा था, कोमो और बोलोनिया. देन फनीली इट वाज ओनली बोलोनिया, क्योंकि ही वाज वेरी क्लोज टू इटालियन, वाज एट दैट टाइम क्लोज टू एक्सटेंडिंग विद बोलोनिया. और फैब्रेगास का फ्यूचर डाउट में चला गया. ऑब्वियसली इंटर ट्राइड अ लॉट टू साइन फैब्रेगास एज देयर कोच. और एक टाइम पे तो ऑब्वियसली ऐसा लग रहा था कॉन्टे भी जाए, बिकॉज वी नो उधर था कुछ ना कुछ चल रहा था. बट पूरे कार्ड्स उल्टे हो गए. ऑब्वियसली कॉन्टेस्टेड. मिलान मेड देयर मूव फॉर अलेग्री, जो नापोली का प्राइम टारगेट था. इंटर बाउंस होने से पहले मिलान मेड देयर मूव. यूवेंटस का लग रहा था भाई
मार्को सिल्वा आएगा, आपका कॉन्टे आएगा, तो वो दे एंडेड अप एक्सटेंडिंग इगोर टूडोर नाउ, इंटर Yeah, लॉस्ट सिमोने इंजागी, मतलब बहुत कुछ चल रहा है. देयर इज इवन इन द नॉट जस्ट टॉप क्लब्स, फॉरगेट द टॉप क्लब्स, बॉटम टेबल क्लब्स में डविडे निकोला जो अपना सेवियर एक्सपर्ट है राइट कैल्शियो में, ही इज लेफ्ट mhm, कैलियरी. Cagliari is yeah, promoting yeah, their Primavera coach there. Hellas Verona, Abhijay के favorite club, they're sticking to Paolo Zanetti. डी yeah, फ्रेंचेस्को, पता नहीं ये बंदा रेलीगेट होके भी वापस सेरिया में आ रहा है, मोस्टली लग रहा है लेच्चे का कोच बनने वाला है, ऐसा लग रहा है योगेश. मतलब ये बंदा अलग ही है भाई, मतलब इसका एजेंट है yeah, ना, इसका एजेंट का नंबर ढूंढ के वी शुड मेक हिम कैल्शियो चर्चा एजेंट. मतलब जब बुरे दिन भी आएंगे ना, इसका एजेंट कुछ ना कुछ ढूंढेगा अपने लिए, मतलब मैं इतना गारंटी definitely. दे सकता हूँ. सो नहीं यार, बहुत बहुत कुछ चल रहा है और बहुत एंड कुछ होने दो वाला दो है. दो मेजर चीजें और मेंशन हाँ, करनी चाहिए. हम्म, लाइक इंटर का कोच का सिलेक्शन का जो पूरा वो चीजें बात हुई, सो मेनी थिंग्स हैपेंड. एंड या यूवेंटस में भी सो मेनी थिंग्स हैपेंड. लाइक या बोर्ड में काफी चेंजेस किए. गुंतोली को नापोली से लेके गए थे यस स्कूडेटो के बाद में, एंड ही या गॉट. या तो बहुत सारी चीजें हो रही है, लाइक बिहाइंड द सीन्स, लाइक ऑफ फुटबॉल काफी चीजें हो रही है, एंड हमें डिस्कस करना चाहिए. एंड यस आई यस वी होप people in comment also enjoy this, and if they want any कोई specific topic पे, if they want us to shed some light, then do tell us in the comments. डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोग कमेंट्स में बताओ व्हाट यू वांट अस टू डिस्कस और व्हाट यू वांट टू डिस्कस विद अस, नॉट जस्ट फ्रॉम अस. यू गाइस हैव टू गिव योर थॉट्स एज वेल. 19 पीपल वाचिंग. बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन मैं यही बोलूंगा, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज डू सपोर्ट द चैनल. वी ब्रिंग ऑल द कंटेंट फ्रॉम हार्ट. सो लेट्स गेट इनटू इट गाइस. थोड़ा डिस्कशन चालू करते हैं. सबसे बड़े, मैं कमेंट्स पे आऊंगा. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स. एटलेटिको मैड्रिड जर्सी है वो देख भाई, मैं जर्सी बहुत कलेक्ट करता हूं तो है. बट लेट्स गेट टू इट यार. फर्स्ट थिंग्स ऑफ इन ऑर्डर, केविन डे ब्रॉयना टू नापोली. योगेश जो थंबनेल है वीडियो का, मैं उसी की पिक्चर पुल अप कर दूं क्योंकि आज usually our thumbnails are made by Ajay bhai and he has a working Saturday today and he absolutely did not have time to make thumbnails understandable. Obviously he has a very big day, so sorry, a long day ahead of him, so he's probably still working, Yogesh, or returning home from work. Yeah, But let me pull up this image because एक तो मैंने डेलोरेंटिस का ट्विटर खोला इधर. हाँ, ये मिल गया क्योंकि डेलोरेंटिस का ट्विटर. हाँ, इटालियन नेशनल टीम के बारे में बात करेंगे, आरएस सब कुछ करेंगे क्योंकि गटूसो इज गोइंग टू बी द कोच. आई होप दिस इज विजिबल योगेश. इज दिस yeah, विजिबल? या yes, yes. सो ऑब्वियसली योगेश फाइनली, मतलब जो रूमर्स थे, केविन डे ब्रॉयना हैज साइन फॉर योर क्लब फॉर नापोली. बीच में ऐसा एक थोड़ा वेटिंग पीरियड हो गया था बिकॉज थोड़ा गैप आ गया था राइट योगेश. इमेज राइट्स की जो डील थी उसकी वो थोड़ा Yeah, फाइनलाइज करने में टाइम लग रहा था और बीच में रूमर्स भी उस टाइम पे आ गए थे कि फेनरबाचे वाज ट्राइंग टू काइंड ऑफ हाईजैक द डील बिकॉज टर्किश क्लब्स को मानो या ना मानो, they have their ways of getting money, sourcing money for yeah. expensive deals. गवर्नमेंट सपोर्टेड टर्किश क्लब्स को. Not just government supported, they have some behind the scenes shady things going on as well. Obviously sponsor wise उनका जो money का जो भी scene रहता है, it is what it is. But obviously Napoli got the deal over the line and finally Kevin De Bruyne is your player. Yogesh, your first thoughts and how excited are you? Because I know to bolta from, we are very honest in your take when you say you watch mainly the Serie A and whatnot, but I'm sure तू Kevin De Bruyne के बारे में जानता है even as a mainly Serie A watcher. तू देख चुका है इसको एट सम पॉइंट. क्या बोलता है, तेरे थॉट्स क्या है? Obviously, like one line में मैं describe करूँ तो I guess since Cristiano Ronaldo's move to Serie A, this is the biggest move that has transfer wise happened in Serie A. वाओ And वाओ because of that, like जैसे Cristiano आया था Juventus में वो time पे, and it brought so much limelight, so many new fans, so many new fan following, and so many new people starting to keep track of what's happening in Serie A. I guess Kevin De Bruyne का transfer भी, it brings so much limelight on Napoli, like what Napoli is doing. Like there will be so many new fans. Kevin De Bruyne का अलग fan following है. They'll be interested in what he is doing, how Napoli is doing. So I'm expecting a huge influx of new Napoli fans here. So it's just and on pitch, तो Kevin De Bruyne का like talent पे no one can raise any questions here. He is undeniably very special talent. And जो midfield trident बनते हुए दिख रहा है with Lobotka, McTominay, Anguissa, and maybe someone else coming in. So I am just imagining that Napoli midfield is going to be very sweet to watch here. So I just hope that this works out well. And personally, जैसे मैंने बताया कि this feels like Cristiano Ronaldo's move to Juventus. But personally, मुझे ये उसके जैसा फील आ रहा है. आंद्रे पिर्लो ने जब एसी मिलान से यूवेंटस मूव किया था इंटरेस्टिंग. एट अराउंड 33 एज पे ही मूव किया था उसने.
right? हम्म And he was one who did not like कि Pirlo का contract extend करना हम्म चाहिए, and Pirlo हम्म went on to Juventus and went on to such greater things. Yeah, so I guess हम्म Kevin De Bruyne still has in it. 33 is a very young age. It's not like he's done and dusted. He does not have हम्म any like. So I'm expecting Napoli to do big things come next season. फेयर इनफ, फेयर इनफ। ये तो इमेज है, वील पुल अप सम डिटेल्स। ऑब्वियसली अगर मैं डिटेल वाइज इस ट्रांसफर की बात करूं, ऑब्वियसली फ्री ट्रांसफर है। ही इज लेफ्ट मैनचेस्टर सिटी आफ्टर अ डेकेड। 2 year कॉन्ट्रैक्ट विद एन ऑप्शन ऑफ कोर्स, एंड इंस्टेंट मैंने जो इमेजेस भी देखे थे, बहुत ऑब्वियसली लव फ्रॉम नापोली फैंस एक्सपेक्टेड है। इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर दैट नापोली मिडफील्ड। अगर आप देखो, जैसे तूने बोला लॉबॉट का, केविन डे ब्रॉयना, पर तूने जैम्बो अंगीसा बोला जिसका फ्यूचर अभी भी डाउट में है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज नॉट ऑफिशियली पुट पेन टू पेपर, राइट? Yeah, yeah. एंड वो अभिजय ने पूछा थोड़ा, मैं उस पर भी टच अप करूंगा, बट जस्ट टू टच अप ऑन करूंगा, जस्ट बट टू गिव माय थॉट्स ऑन केविन डे ब्रॉयना टू नापोली। नाउ सी, केविन डे ब्रॉयना फिटनेस वाइज उसके स्ट्रगल्स रहे। we have seen that, we have heard, I'm sure even as a Napoli fan, you must have heard about it इधर उधर थोड़ा। but at the end of the day I feel for how our league plays out, जो games अपने लीग में होते हैं, राइट योगेश, स्पेशली I'm not saying Mhm. एकदम, दिस इज नॉट मी सेइंग अपना लीग खराब है ऐसा कुछ, बट टैक्टिकली स्पीकिंग, मैं टैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, राइट? आई Yeah, yeah. फील to add that depth, no, I'm not saying he's going to be a bench player by the way, वो नहीं बोलना है, but to kind of add that depth, and if you sign, let's say an Angisa replacement if he leaves, or if you sign जो बिलिंग का भी आप लोग रिप्लेसमेंट देख रहे हो, वो Yeah. थोड़ा अगर आप मिक्स एंड मैच करके अपनी मिडफील्ड थोड़ा डेप्थ वाइज सॉलिडिफाई करो ना, तो डे ब्रुयने की साइनिंग परफेक्टली बैठती है। एंड अगेन एट द एंड ऑफ द डे आपको देखना पड़ेगा, यू आफ्टर क्वाराट्सखेलिया लीविंग, यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि ठीक है, Yeah, नेरेज वो ट्रिकी प्लेयर है, बट ही इज नॉट दैट क्रिएटिव। लेट्स बी वेरी yeah. ऑनेस्ट, वो नेरेज वैसा प्लेयर नहीं है, और उसका मैंने तुझे जो वार्न किया था नेरेस के बारे में, उसके परफॉर्मेंसेस विल डिपेंड ऑन हिज एटीट्यूड डे टू डे बेसिस पे, लिटरली वो Yeah, है वैसा टेम्परामेंटल काइंड ऑफ प्लेयर। आई नो सैंपल साइज नापोली में थोड़ा कम रहा है नेरेस के लिए, मैं ब्लेम उसको एकदम से yeah. ये नहीं बोल रहा कि इट्स नॉट वर्कड आउट, बट यू डोंट, वंस क्वाराट्स के लिए लेफ्ट, आपके पास वो टाइप की क्रिएटिविटी नहीं थी योगेश, लेट्स फेस इट। एंड आई फील इफ तुम लोग केविन डे ब्रुयने को एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम दोगे, दिस इज मेनली कमिंग फ्रॉम द फिजिकल साइड ऑफ थिंग्स, राइट? बिकॉज ऑफ हिज ऑब्वियसली विद एज थोड़ा फिजिकल डिप हो रहा है जो उसका, वो कर ले, वो बहुत अच्छा करेगा इस लीग में। आई फील कॉन्टे ए विल मेक श्योर फिटनेस वाइज वो एक अच्छे जोन में रहे। माय थोड़ा मेरे को जस्ट डाउट आता है कि वो क्वांटे की जो कभी कभी शेड्यूल जो होता है, ट्रेनिंग का इंटेंसिटी, जो ट्रेनिंग रेजिम होती है, वो केविन डे ब्रुयने को ओवरऑल सूट करेगी, बट देन अगेन दैट्स देयर लुकआउट, दैट्स नॉट माय लुकआउट। आई फील, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई फील ही फिट्स इन दैट नापोली मिडफील्ड वेल। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ, for me, the support system, because you will have games, Yogesh, where you guys will need Kevin De Bruyne to put that extra defensive work rate, do थोड़ा off the ball, which उसका थोड़ा फिजिकली अगर आप देखो वो उस स्टेट में पहले जैसे नहीं रहा है, राइट? जस्ट एज आई सेड, सो फॉर Mhm. मी दिस ट्रांसफर ओवरऑल इज वेरी गुड, इट्स अ टॉप साइनिंग, मैं ये नहीं डिनाई करूंगा जरा भी। आई थिंक जैसे तूने बोला नए फैंस, क्योंकि देख, इन द वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैंस, देयर आर फैंस दैट follow a certain player, they join because of that, what not, everybody has their own journey। केविन डे Yeah, ब्रुयने एक एक्स लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी लाएगा नेपल्स में। ये मैरिज, as they say in Italy, they use the term marriage, right? When certain Mhm. transfers happen, it makes more sense. It on paper at least बाहर से बहुत fruitful है, because तुम्हारे पास एक फुटबॉल सिटी क्रेजी है नापोली जैसी, जहाँ भी सेलिब्रेशन आई एम श्योर चल रहा होगा, बिकॉज मैं जानता हूँ नेपल्स के बारे में, वो लोग एटलीस्ट और 5-6 महीने उस स्कुडेटो को सेलिब्रेट तो करेंगे ही। ऊपर से तुम ला रहे हो डे ब्रुयने को, तो यू आर जस्ट गेटिंग देम मोर एक्साइटेड, एंड ऑनेस्टली दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर नापोली को देख, फॉर नापोली टू लुक अराउंड एंड सी कि भाई बाकी कोई क्लब में स्टेबिलिटी नहीं है टॉप, जो अगर आप टॉप 3-4 में देखो। yes, Inter has good players, Inter has squad wise they have the depth, but they have now Christian Kivu as their coach, so थोड़ा imbalance है। Juventus again rebuild process चल रहा है, I'm sure UA fans in the chat will agree, व्लाहोविच के साथ क्या करना है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, फाइनली इगोर टूडर अब जाके कंफर्म हुआ है। AC Milan ठीक है, चलो, you have to keep an eye on them। Allegri might not be the same, but he's a coach that can still guarantee some stability, Yogesh, right? And then yeah, they're also getting some veterans in, like ठीक है, Modric भी पहले जैसा नहीं रहा है, but Modric is still, he has something there to offer, I feel, at least personally. So yeah, yeah. this is a good time for clubs like Napoli and Roma to look to say, look, bhai,
दूसरे क्लब्स को देखो वो लोग क्या कर रहे हैं. वी आर द वंस हु कैन काइंड ऑफ बी स्टेबल. कॉन्टे रह रहा है. वी नीड टू बोल्स्टर आवर टीम. यू आर लुकिंग एट अदर प्लेयर्स एज वेल. ऑब्वियसली आप लोग के दूसरे लिंक्स भी है विच वी विल टच अपॉन. For me, it's like as long as you give him the right support system, as long as Conte manages to grow out of this UCL nonsense, वो जो हमेशा करता है, ग्रुप स्टेज में निकल जाता है. अभी तो उसके पास एक्सक्यूज भी नहीं है योगेश. अभी तो 24 टीम क्वालिफाई होती है. इसमें अगर वो फकअप किया ना, तो आई विल नॉट हैव वर्ड्स फॉर दिस गाय. लाइक आई विल बी इवन, आई थिंक इवन यू शुड बी पिस्ड इन केस दिस गाय fucks up in the top 24. But obviously वो जब आएगा तब देखते हैं. Like but I feel you guys should be very happy about this. मतलब it's insane what this क्या बोलते हैं अपन, what Napoli, the way they've turned it around, right? कि एक पॉइंट पे लग रहा था कॉन्टे जा रहा है, और अब suddenly you have De Bruyne coming in here. So पर if you had to rate this transfer on 10, Yogesh, 10 on 10. या डेफिनेटली 10 on 10 मैन. एंड 10 on सिर्फ ये ट्रांसफर से केविन डे ब्रुइन नहीं आया. इट इट I guess it was the one of the biggest reasons why Conte agreed to stay on, because it of showed course. like it showed him that De Laurentiis is finally serious about Hmm. making a good impact and making a strong winning project for coming years. So I guess एक तीर से दो निशाना चलाया De Laurentiis ने ये ट्रांसफर करके. मुझे तो एक मिनट दे, because I can see my screen is clearly frozen. If you can just take the comments until then, Yogesh, I'll just Yeah, refresh sure. my page and be back. I think yeah, just give me 1 second, I'll be back. Yeah, sure. तू तब तक कमेंट्स ले ले और कमेंट्स के साथ चैट कर, मैं आता हूँ. So Madrid's क्या ये Yeah, I'm Madrid back. star Rohit he says Yeah, King Kevin De Bruyne. Madridista Rohit King Kevin De Bruyne. He says I'm back already. चलो at least Yeah, मेरा लैंग्वेज हो गया. He says Abhijay says oh Kevin De Bruyne in Naples. Kevin De Bruyne के लिए उन्होंने ऑलरेडी एक मस्त नापोली फैंस ने कस्टम सॉन्ग निकाला है कुछ, which is very yeah, catchy. yeah, I saw it yeah. on Instagram, but अगर मैं वो प्ले करूंगा ना तो मेरे को लगता है कॉपीराइट लग जाएगा, तो मैं might as Yes, well yes. not play. So अंगीसा का I just saw something. I'll pull up some Yeah, yeah. Angisa का Arab links are Saudi Arabia में. There's some yes, club called Al Qaides. Al Qadisiyah. Yeah, Al Yeah, Al Qadisiyah. Qaides. So I guess they are offering, but I guess they offered something around 20 million euros. And You can't compete with that kind of money. भाई सिमोन इंजागी को भी दो साल के लिए 50 मिलियन दिया है यार. It's impossible. Like today यही news which you're talking about, it is there yeah. कि Al Qadisiyah has shown strong interest in Zambo Anguissa, and 25 million is what's being asked by Napoli, which I guess is fair. But या मैन, क्या बोलता है तू अंगीसा? तेरे को लगता है जाने देना चाहिए कि रखना चाहिए, मतलब कंसिडरिंग, बिकॉज ऑनेस्टली आई विल पोज इट टू यू लाइक दिस योगेश. अगर उसको एक्सटेंड करना होता ना अब तक, आई थिंक ही वुड हैव, लाइक ठीक है, आई नो द स्कूडेटो रेस वेंट डाउन टू द वायर, सो दैट इज वन रीजन टू होल्ड आउट. Mhm. बट क्या बोलता है, तेरे को लगता है यू थिंक ही शुड बी लेट गो गिवन दैट ही इज नॉट एक्सटेंडेड येट? डेडलाइन 30 जून की होती है. हमें आई मीन टेक्निकली Yeah, स्टिल टू मुझे बी. yes, yes. हाँ. तो like पूरा overall situation में देखो, like Angisa how he came in, like he was a last day signing of this Spalletti's first season if I remember यस. correctly. यस. And लोन पे आया था तभी. And after that nobody expected a lot from Angisa. Like transfer market के last day signings are just like very opportunistic signings की कुछ अच्छा मिल गया then your आपका नसीब है. And Angisa has been like more than like uh, he Yeah. justified his position throughout two Scudetto wins. Yeah, so he has been, and last season Conte ke under, it has been his most productive season in terms of number of goals and assists that he contributed to. So I guess थोड़ा एक chapter closing क्या पास में Angisa is coming, like he gave Hmm. whatever uh, he wanted to as a player and as a person he wanted to give to Napoli, and if he moves to Arabia now with for the money that they are offering, I don't mind it here. Like he earned his place, and I don't like we cannot compete. Like Italian clubs cannot compete with the money that is on offer in Saudi Arabia. वी कांट कम्पीट विद. अगर हम प्रीमियर लीग मनी के साथ कम्पीट नहीं कर सकते तो सऊदी अरेबिया Yeah. मनी भी. एंड देख यार, अपने लिए ना क्रिटिसाइज करना आसान हो जाता है इन प्लेयर्स को, अरे यार पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बट एवरीबॉडी हैज देयर रीजंस एट द एंड ऑफ द डे. Yeah, ऑल yeah. दीस प्लेयर्स हैव स्टार्टेड आउट इन अ पुअर बैकग्राउंड एंड व्हाट नॉट, सो व्हेन दे गेट चांस टू मेक मनी दे विल टेक इट. लुक, इवन मैंने जो जो मेरा इंटर का वीडियो था ऑफ दैट होल रैंट और व्हाटएवर दैट यू वांट टू कॉल इट, Mhm. मैंने बोला सिमोने इंजागी पैसा देख रहा है, व्हाटएवर
I did say he looks like a bit of a coward, but apart from that, I don't really blame him for leaving. मेरे को उससे कोई problem नहीं है because at the end of the day, he gave a lot to Inter. With minimal Yeah, resources, this guy brought us to 2 Champions League finals. He yeah, yeah, brought the best out of us. So honestly, no problem. And जैसे तूने बोला एक cycle जब खत्म होता है ना, as a club, even you need to understand that because at times players then remain unhappy और फिर वो अफेक्ट करता है प्लेयर्स को. एंड आई फील इफ जैम्बो गंगीसा जाए, अगेन मेरा वही है कि एज लॉन्ग एज जैसे तूने बोला डेलोरेंटिस को रियलाइजेशन थोड़ा हुआ है मुझे लगता है बिकॉज कॉन्टे का एक कोट है इसके पे दिखाता हूँ आज का ही. दैट्स व्हाई यू हैव समवन लाइक अ केविन डे ब्रुयने कमिंग इन. दैट्स व्हाई दूसरे भी आपके ट्रांसफर के रूमर्स चल रहे बिकॉज मैंने तुझे लास्ट सीजन में बोला था नापोली का स्क्वाड was good enough, was okay enough for one game a week. Now you have to be real. yeah. You Definitely. मैं you एक पॉइंट यहाँ पे रेज करता हूँ एंड आई थिंक परम यू विल लाइक दिस. Inter played 19 more games, like 19 games more than Napoli last season. And एक लीग सीजन 38 गेम्स का होता है, तो दैट इज yes. हाफ अ सीजन मोर, लाइक वन एंड हाफ टाइम्स, लाइक Yeah, yeah, 50% मोर गेम्स खेला है. एंड yeah, दैट ये Napoli squad needs a lot more reinforcements if exactly. we have to compete anywhere close. एब्सोल्युटली. और एक चीज मैं भी बोलूंगा, कॉन्टे को अब ये सीजन में चैलेंज किया है जो लास्ट सीजन में प्लेयर्स को खिला रहा नहीं था. अब वो राफा Yeah. मरीन की साइनिंग भाई मतलब वो टैलेंटेड प्लेयर बंदा था, उसका डेपोर्टिवो अलावेस में अच्छा सीजन था, पर Mhm. नापोली ने उसको बेयरली यूज किया है. लाइक Yes, yes, yes. दिस हैज टू स्टॉप फ्रॉम कॉन्टेज एंड ऑल्सो. अगर तेरे को एक्स प्लेयर देख, योगेश अपन जाते ही इज नॉट गोइंग टू गेट एवरी प्लेयर ही वांट्स, लेट्स बी रियल. लुका Yeah, मारियानुची आया, he's had a good season with Empoli, fair enough, आ गया. Your yeah, this guy Kevin De Bruyne has come, but you will not get all the players you wanted. You signed Luis Hassa, but do you have yeah, a plan for Luis Hassa? Like वो Conte will have to make do with some players, and उसको वो stubbornness हटाना पड़ेगा. ये उसने पास्ट में भी किया है जब उसको क्रिस्टियन एरिक्सन फॉर समरी याद है जब इंटर ने साइन किया था, ही जस्ट डिडंट यूज क्रिस्टियन एरिक्सन. एंड भाई बट यू नीड एट सम पॉइंट व्हेन यू कंपीटिंग नाउ यू विल बी ऑन फोर फ्रंट्स जस्ट लाइक इंटर वाज लास्ट सीजन. You'll be in the Scudetto, Coppa Italia, Super Coppa, your Champions League. Now you have to start using your resources. So that has to change from his end. Let me take more comments. Napoli के पास इतना पैसा देख. Napoli बिलिंग बिलिंग का कमेंट था उसके अंदर, लाइक सेम हाँ क्वेश्चन में अभी. बिलिंग का बराबर. बिलिंग को रिन्यू नहीं कर रहा है, बिलिंग हैज बीन Yeah, सेंट बैक. he's been said. Correct. बट ही कंट्रीब्यूटेड, लाइक इंटर के साथ एग्जैक्टली में जो होम वो गेम था, इंटर ही के आगे गोल मारा या क्योंकि अगर वो गोल. वो एग्जैक्टली वो गेम तुम लोग हारते तो टाइटल अभी हमारा होता. सो अच्छा लगा कुछ एक काम की एक चीज कर. गेम से टाइटल जीता, तो लाइक हर एक पॉइंट ने ये स्कूडेटो एग्जैक्टली को बिल्ड किया है, तो एग्जैक्टली वेरी हैप्पी एग्जैक्टली फॉर हिज कंट्रीब्यूशन. बट यार हिज परफॉर्मेंसेस वर नॉट अप टू द मार्क यार. या ही इज नॉट, ही वाज पास्ट इट. सो देख पैसा इन द सेंस, देख मैं एक चीज बोलूंगा कि दे आर यूजुअली a club who stay within their means. They are not like rich, but Yeah. years of selling, maintaining the books and balancing the books, they have a certain ability to spend, which you are seeing now. अभी थोड़ा obviously with the Osimhen thing थोड़ा tricky zone है क्योंकि last season Yeah. ideally for the books they should have sold him last season, but ठीक है ऐसा लग रहा Yes. है बिक जाएगा वो. They have to Yes. sell him this window. By the way, Yogesh, if you guys don't sell him this window, then Yeah. तुम लोग का Yeah. थोड़ा dicey हो सकता है. But you have Seaman already rejected a huge transfer from to Al Hilal. Saudi Arabia. Yeah. Yeah. So But अभी he वही rejected that. Galatasaray. तो like Club World Cup में खेलने का opportunity था इसको. He got Yeah. around 30-35 million euros per year का deal. I don't know what's going on in his head यार. तो उसका वो पागल है. मैं तेरे को बोला था डू नॉट फॉल इन लव विद दैट गाय. ही इज फकिंग बिकॉज़ ये यही बंदा वाज एंग्री एट नापोली बिकॉज़ दे रिजेक्टेड अल अली's ऑफर लास्ट सीजन इफ यू रिमेंबर 5 yeah, मिलियन के लिए. yeah, ही yeah, yeah, वांटेड द बैक. सो इसका ये जो लोग उसको प्रेस करेंगे उसको पैसा नहीं चाहिए. उसको लास्ट सीजन चाहिए था पैसा. उसको जब Mm. नापोली ने जाने नहीं दिया अल अली तब वो भड़क गया था. तो भाई मतलब उसको डिफेंड मत करो. मतलब you defend him if you want, but the point is he also wants his money. Yes, Yeah, 5:30 को kick off है इंटर मायामी और अल अली का. This will be the only edition of Club World Cup. Mark my words. Oh, bold words. So he's trying to say कि इसके आगे वो Club World Cup का ये फॉर्मेट कंटिन्यू नहीं होगा. ये Let's अभिजय का जो प्रीवियस कमेंट था, नापोली के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है. एक तो ऑसिमेन ट्रांसफर है एंड प्लस चैंपियंस लीग में एज स्कूडेटो विनर्स जा रहे हैं, तो यू पैसा गेट तो एडिशनल लाइक 90-100 मिलियन यूरोस का एडिशनल वो किक मिल या गया. चैंपियंस लीग. बट फक योगेश, ये फनीली इनफ ये है ना कि participating in the club world cup, right? If you go to a certain point you can actually get more money than you do in the Champions League, which is crazy Yeah, for a yeah, loss making tournament. That's crazy. yeah, क्वारा के पैसे भी है ऐसे. देखो मैं एक चीज फाइनेंसेस के बारे में समझाना चाहता हूँ आपको. It's not like all of us are experts, even I am not, but कैसा होता है ना,
हर एक पैसा जो क्लब में आता है ना, इट्स नॉट अबाउट ट्रांसफर्स, देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो Yeah, yeah. in money finances. Like for example, जैसा क्वारा का बोल रहे हैं, I'm sure that gets accounted for transfers, but not all of it gets accounted for transfers. So जब आप पार्टिसिपेट करते हो कोई कंपटीशन में, जब आपको किसी कंपटीशन से पैसा मिलता है, इट ऑल्सो इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदर थिंग्स. लोगों को लगता है ना योगेश की पैसा आया मतलब चलो मार्केट पे उड़ाने के लिए पैसा गया है, ऐसे नहीं होता है, स्पेशली योगेश फॉर And इटालियन yeah, yeah, क्लब. definitely. And अभी like to to spark some fire in the comments, लुकमैन के भी rumors चालू हो गए हैं. हाँ वो देखा मैं, वो देखा 60 million लुकमन का. euros का डील का कुछ एग्जैक्टली. पैकेज चालू है. तो या let's see लुकमैन के, and I guess लुकमैन also wants to move out from Atlanta now that बट coach has changed and all. So let's यस. see if या Lukman, I don't see Lukman staying in Atlanta this season. Whether to देख Napoli or whether to some other clubs, he'll उसके definitely छोड़ने be के moved. उसके छोड़ने के रूमर्स ज्यादा थे एंड आई एम श्योर ही स्टिल वांट्स टू लीव, बट वो कॉन्फ्लिक्ट जो भी था गैस्पेरिन, नाउ गैस्पेरिनी इज गॉन, सो यू नेवर नो इफ दिस गाय डज नॉट गेट अ क्लब. नाउ ऑब्वियसली आप लुक उधर देख के बोल सकते हो यूरिच इज द कोच. नाउ यूरिच डिड नॉट हेल्प हिमसेल्फ विद हिज रीसेंट जॉब्स, so that is also a factor for leaving, but let's stick to Napoli for now, then let's shift go Yeah, club by club थोड़ा. yeah, पहले मेरे yeah, को yeah. कमेंट्स में दे जरा गटूसो ऑन द व्हील. हाँ ये मेरे को डिस्कस कर रहा था बिकॉज दिस इज, मेरे को ये इटली का पूरा मेस सम अप कर देता है अगर आप गटूसो को अपना कोच बना दो तो. डजोन पे फ्री पे है. यस, थैंक यू अनीश. स्वयं से कैसे हो, इंटर नीड्स रीबिल्ड. यस, थोड़ा आप उसके ट्रांसफर भी बात करेंगे. नॉट अ ग्रेट सिचुएशन टू बी इन. डजोन पे यस यस एग्जैक्टली. थैंक यू फॉर ऑल दोस पीपल लेटिंग अस नो. महाकारुणिक. ऐसे ही अगेन एज ए सेड, मैं जर्सी कलेक्टर, मेरे को एटलेटिको मैड्रिड से कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैंने योगेश को भी बोला है मेरे पास हैमसिक का नापोली जर्सी है, सो आई Yeah, एम अ जर्सी yeah. कलेक्टर. आई जस्ट डोंट हैव एसी मिलान और यूवे किड्स बिकॉज़ दे आर आउटराइट राइवल्स. इवन नापोली इज अ राइवल, बट मेरा क्या था, मेरे को हैमसिक बहुत पसंद है. इज लाइक वन ऑफ माय मॉडर्न डे फेवरेट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, मॉडर्न डे में. और उस टाइम पे Yeah. 2015-16 का सीजन, जिसमें तुम वो कौन सा 16-17, जिसमें तुम लोग इधर ना पैंथर का प्रिंट है ना वो एकदम. Yes, yes. हाँ मेरे वो वाला पास है. भी, yes, But मेरे पास not भी. with the neon one. I have the white one, not the neon one, because the neon one was the Champions League one. I remember, right? अच्छा, Specifically. अच्छा. तो वो वाला है मेरे पास. और उस टाइम में मेरे को पता नहीं था स्लोवाकिया की जर्सी में कहाँ से निकालूं, बराबर. तो मैंने ले लिया नापोली की मिल रही थी तो. पेडुला रिपोर्टिंग दैट रोवेला, या सो निकोलो रोवेला योगेश इज वेरी, अगर तो उसके इंटरव्यू में पड़ेगा ना, इज वेरी अटैच्ड टू लाजियो राइट नाउ. एंड यू नो, तू जानता है, इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड प्लेयर्स इन इटली राइट नाउ. मतलब वो रेजिस का जो रोल होता है बहुत मुश्किल खेलना, नंबर 6 का, जो तेरे हाकान तेरा लबोट का खेलते हैं राइट इतने अच्छे से. Yeah, yeah. there's no surprise that clubs want Rovella, but उसकी प्राइस एक तो लाजियो से डील करना मुश्किल होता है. 50 मिलियन 40 मिलियन मांग रहे हैं वो लोग. आई थिंक इज अ 50 मिलियन रिलीज क्लॉज इन हिज कॉन्ट्रैक्ट. एंड Rovella, surprisingly, not surprisingly, comes from a generation of family. Basically, his family, 6-7 generations are Interista, and he also grew up as an Interista. But obviously now he's so attached to Lazio that even he does not want to leave. So I honestly don't think Rovella छोड़ेगा Lazio. मुझे लग रहा है वो he will stay. And also Lazio का भी मुझे डिस्कस करना because Sarri is back. मतलब ये बंदा अजीब है भाई, मतलब मेरे को समझता नहीं है बंदा. Honestly, he's back at Lazio. Yildiz come to Arsenal, minor links. नहीं यार, he's not. He's too important. He's too central to US project. क्या बोलता है योगेश? Simple yes or no. Yildiz to leave Juventus? I say no. No, no. No, I Not don't at think all. so. It will happen this transfer market. Not at all. Not at all. धोखा नहीं. Again, jersey collector भाई, और कुछ नहीं. नापोली की मिडफील्ड could be KDB, McTominay, Anguissa and Lobotka. See, मैं वही बोल रहा हूँ योगेश. You need to have a strong support system for him because you know there will be injuries with this guy most likely. Yeah, yeah. Even with Conte, you replace, if Anguissa leaves, you replace him well. आप वो बिलिंग का रिप्लेसमेंट, बिकॉज आई नो दिस थिंग फ्लोरेंटिनो लुइस के लिंक्स थे. आई नो देयर स्टिल यूनिस सम. मूसा का लिंक से अभी चल रहा है. यूनिस सॉरी. मूसा फ्रॉम हाँ, यूनिस मूसा फ्रॉम how did एसी I मिलान. forget that? So Yeah, Pedula reported this. Just I'll pull this up. Let me थोड़ा just take some comments, then we can move on from Napoli and the Musa links. yeah. Yes, बात करेंगे आरएस, इसके बाद ही करेंगे घटूसो के बारे में, because I still can't wrap my head around that. Like मैं तो इटली फैन भी नहीं, तो भी मेरा दिमाग घूम रहा है. देख ये इन पेपर पे तो yes, but I don't think this is a fair comparison, योगेश. I mean क्या बोलते हैं तू? Yeah. Because मेरे, They play in different positions. yeah, I think Zelensky this का is, अपग्रेड ऑलरेडी हमें मिल गया था यार. मैकटोमिने वो Zelensky is upgrade. वो भी अलग प्लेयर है. To be fair, again, अलग these are player है, two. but KDB is on next level यार. Yeah, I see Zielinski का रोल ऐसा है कि आप बोल, नापोली ने उसकी तरह का प्लेयर साइन ही नहीं किया.
The thing is, they've chosen not to have that kind of a player. If you Yeah, understand home, like yeah, De yeah. Bruyne ठीक है क्रिएटिविटी लाएगा, बट जो जेलेंस्की दैट काइंड ऑफ रोमिंग रोल में था, वो काइंड Mm-hmm. ऑफ प्लेयर उनके पास है ही नहीं. आई डोंट थिंक दे आर लुकिंग फॉर मक्टोमिने. योगेश तू जानता है, जैसे योकोस्टोव ने भी अपने को बोला था, टेक्निकली गिफ्टेड नहीं है, बट यू विल गेट दैट गोल स्कोरिंग फैक्टर व्हिच यू गॉट इन योर फेस काइंड ऑफ प्लेयर. Mm. केविन डे ब्रुयने आई फील ट्रांजिशन में काम आएगा, गिवन द स्टेटस ऑफ हिज फिटनेस एंड एवरीथिंग. सो आई डोंट थिंक दे रियली नीड अ ज़िएलिंस्की रिप्लेसमेंट. अगर तुम ज़िएलिंस्की के बारे में सिंपली पूछ रहे हो, यस, उसके इंजरी इश्यूज थोड़े रहे इंटर में, उसको थोड़ा सा मतलब ही इज बीन ओके, बट ऑब्वियसली मोर वाज एक्सपेक्टेड. ये ले Yeah, लिया था. सॉरी, केडीबी विल बी अ गेम चेंजर अंडर आइडियल, बट आई एम श्योर दे कुड हैव फाउंड अ बेटर लोकेशन फॉर द पिक्चर. हाँ, वो एडीएल का स्टाइल है ना स्वर्णिम भाई, वो मतलब उसको जहां भी कुछ भी मिल जाए उसका. ही इज अ डायरेक्टर आफ्टर ऑल ऑफ मूवीज. ही इज इन्वॉल्वड इन द फिल्म इंडस्ट्री योगेश, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होना ही है. बट mm. या, kudos to Napoli for pulling it off, because honestly it's a big deal. माफिया फंड ये वो तो नहीं यार, मतलब वो देख, वो अभी जो डॉजी चीज है वो इटालियन फुटबॉल ये वो एसोसिएशन तो रहेगा, बट आई they are financially sound. So yeah, and again you have to remember Kevin De Bruyne took a wage cut. So Yeah, yeah, yeah. he had a choice to go to the MLS to, as well, but he obviously turned that down. Given Napoli is relatively thin strength and depth at CB wise, Conte focusing on attackers Chiesa and Nunez. हाँ, ये भी थोड़ा briefly बात करें, especially money being अरे अभी bandied about. ब्यूकुमा Chiesa, का ब्यूकुमा फ्रॉम बोलोनिया के पीछे लगे हैं अभी तो. सैम ब्यूकुमा फ्रॉम बोलोनिया उसके पीछे yeah, लगे हैं. Sam Boykema, correct, Sam Boykema, yeah. हियन फ्रॉम एटलांटा के पीछे भी लगे हैं. आई डोंट नो हिज फुल नेम. एरिक हियन. Isaac here. आइजैक हियन, या आइजैक हियन के पीछे भी लगे. एंड या एंड रहमानी को भी कंफर्म करने वाले. लाइक आई डोंट थिंक सो द क्लब विल लेट गो ऑफ रहमानी. एंड बुंजोर्नो तो है ही. तो Juan, he just got confirmed as well. So only so out of the four center backs, only Rafa Marin is going back to La Liga, and Bukuma का very strong links चालू है. तो it's not like कि Napoli is not focusing on center back position. They are just that Bologna से double deal करने वाले हैं. Like Endoy के लिए भी links चालू है and Bukuma का भी links या, चालू बट ऑनेस्टली मुझे वो मुश्किल लग रहा है, वो डबल डील. मतलब बोलोनिया अभी, ऑनेस्टली नापोली ने कॉन्टे रख लिया, सो यू आर राइट देयर, अप देयर इन द स्टेबिलिटी कन्वर्सेशन विद बोलोनिया. बट ऑनेस्टली दो एक प्लेयर तो मेरे को लगता है बोलोनिया का ले सकते तुम लोग, बॉयकेमा, बिकॉज है. इंटर has cooled their interest in Boykema initially. Into we were secretly, I'm a bit happy we have cooled our interest. I feel Boykema ना honestly कॉन्टे के अंदर सिस्टम वाइज बेनिफिट करेगा, बिकॉज आई डू थिंक बॉयकेमा के बहुत फ्लॉज है गेम में. लाइक मैंने ना ये एक स्ट्रीम में बोला था योगेश, जब लुकुमी और बॉयकेमा का जो पेयर है ना बोलोनिया में, वेरी वेरी गुड प्लेयर्स. when they have a good day they're extremely good, but when they have a bad day they're terrible. Like they, I've Yeah, seen games of Bologna where they got nutmeg, they got floored. So Napoli also for me has to be very careful with this Boykama deal. You can spend X amount and not beyond that. But I agree with Satwik that Napoli should actually look at defenders, because Chiesa Chiesa feels done to me. I'll be very honest with you. yeah, yeah, Chiesa, yeah. His career has been very tragic. I feel injuries have done him very badly. And last hmm, season, even though Liverpool won the title, I don't think so. उसके कुछ major contributions रहे थे वो title win में. So I guess hmm. Chiesa as a He player. barely played, and look, उसके लिए Napoli at this stage of his career would be excellent. उसको वो क्यों नहीं लेगा भाई? He will want that move at the end of the day. He needs a top club like Napoli to say. I just don't think it makes sense. I do agree with Satwik कि थोड़ा डिफेंस, बिकॉज देख रकमानी सिस्टम से बेनिफिट करता है. मैं ऑनेस्टली बोलूंगा इंडिविजुअली अगर तो मुझे उसमें कुछ गलत नहीं है, बट तू भी जानता है रकमानी इज नॉट द greatest of players to rely on when you're going to play four competitions. You're Yeah, not yeah, going to play 1 week now, 1 game per week now. So आपको आपका एक्चुअली डिफेंस, आई नो बॉयकेमा के लिंक्स है, एंडॉय भी है. एंडॉय इफ यू पुल ऑफ, that's a proper Conte type player for me, and yeah. that is important if you pull it off. I will come to it. Let me just quickly take a few comments. We'll discuss Napoli ka closing and then go to Gattuso to Italy. Yeah. Siddhant, nice to have you. Interest in the house. Raspadori का future भी थोड़ा. So interesting चीज योगेश, तेरे को पता है अगर, रास्पाडोरी का प्रॉब्लम क्या है ना, ही डज नॉट फिट्स इन दी 4-3-3 या फिर yeah, जो भी he doesn't, he फॉर्मेशन. doesn't. ट्रेको आर्टिस्टा वाले पोजीशंस सरिया में ही बहुत कम क्लब्स है जो ट्रेको आर्टिस्टा के साथ में खेलते हैं यार. तो Hmm. उसका पोजीशन थोड़ा मैच नहीं हो रहा है. बट ही हैज बीन इमेंस यार. लाइक उसके गोल्स कंट्रीब्यूशंस स्पेशली व्हेन प्लेयर्स वर आउट, इट वाज इमेंस यार. तो आई डोंट थिंक सो रास्पाडोरी विल बी लेट गो.
he that's the kind of player he is. But now वो contest struggle, जैसे तू बोला contest struggling to get him to fit into the team. And funnily enough, DiMarzio reported it this the other day. वो बोल रहा था कि had Simone Inzaghi stayed, obviously because Fratesi and Simone Inzaghi का वो बन नहीं रहा था. So Mm-hmm. Inter and Napoli were basically considering a Raspadori Fratesi switch with some Swap, cash yeah, on it, which yeah, could have made sense for both parties. Now that Simone Inzaghi is gone, there is a higher chance of Fratesi also staying because Kivu apparently likes him. So yeah, just to touch on that, Shivam is in the house. Nice to have you as always, Shivam. We will have you on the panel on more episodes to talk about the South American side of things in generally because Lukumi के links है बोनमत से. मैं इधर pray कर रहा हूँ. Please stay at Bologna. Please, like I know the money will be more in Bournemouth, but please stay at Bologna. Please play Europa League. It's a great club to be. It's the one of the most stable clubs in Serie A. It's a club with a proper project, Yogesh, that I feel with the chaos going on with other teams should try to break into top six. Honestly speaking, मेरे हिसाब से yeah, yeah, मतलब be a consistent like Atalanta was in the past. yeah. Lindstrom को मेरे को लगता नहीं कॉन्टे रखेगा यार. He's just not No, a no, कॉन्टे type of player honestly. ये Rossoneri नहीं है तो ये this is Rohi Blanco, right? So Neres is a doku like player. I agree. A runner like Lukman, he could not be the creator in the team. Absolutely. With other teams in transition, Napoli with this kind of window they're having should be favorites again. Time to farm. देख ये अभी से ये मैं वही बोल रहा हूँ. But अपना main question वही होता है योगेश. Can Conte erase the ghost of his past, which is playing in multiple competitions? Can he get yeah, over this? Because yeah, last season कोपा इटालिया तो नहीं कर पाया वो. अब टेस्ट है. अब अगर आपको अच्छा विंडो मिल रहा है, which looks like he is going to get a good window. That is why yeah. he has still. कॉन्टे कॉन्टे का हिस्ट्री रहा है यार, लाइक यूवेंटस के साथ में भी, लाइक हिज चैंपियंस लीग परफॉर्मेंसेस वर वेल बिलो द पार, लाइक बॉस दोस यूवेंटस की क्या टीम थी यार, उसके साथ में ही वाज गेटिंग ग्रुप स्टेज एग्जिस्ट. बॉस एंड चेल्सी के साथ में भी, लाइक ही वन द टाइटल, बट ही वन द टाइटल व्हेन चेल्सी वर नॉट प्लेइंग इन एनी नॉट प्लेइंग कंपटीशन. 10th के बाद भाई हमारे साथ भी उसको जो प्लेयर्स चाहिए थे उसको फकिंग उसके लिए हकीमी लिया रियल मैड्रिड से खरीद के लुकाकू दिया क्रिस्टियन एरिक्सन दिया जनवरी में उसको सब दिया फिर भी दिस या guy finished last in the Champions League group like it's unbelievable like या you get the point right so he has a point to prove and he better do it now because it's too late in his career Yogesh has he's a I feel he will be a class coach when it comes to coaching in leagues, he should be one of the best in the world. But when it comes to coaching multiple competitions, he has to erase that black spot. He has to erase it. Yes, I was. Now I'm back. Yes, good song for Suchis. Peter Suchis is a signing Inter have made, which I will touch upon briefly. Very excited about it. मिलान फैंस ये अच्छा ये लास्ट ट्रांसफर टच करके ना वील क्लोज द नापोली साइड या बिकॉज या योगेश मिलान फैंस कैन नॉट स्टैंड यूनुस मूसा दे कैन नॉट बिकॉज बहुत ब्रेंडेड प्लेयर है मतलब वो बहुत सिली चीजें करता है वो मुझे समझ रहा है वो कॉन्टे को क्यों पसंद है बिकॉज ही इज लाइक द ही हैज द प्रोफाइल ऑफ अ टैंक ऑफ सॉर्ट्स लाइक बट ही इज नॉट वो क्वालिटी नहीं है बंदे में समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ ही इज नॉट इंटेलिजेंट ही इज नॉट गिफ्टेड टेक्निकली और नथिंग how are you feeling because I can see Conte try improving him I can see it picture because Conte की history है average players को fix करना but still spending money on him are you Yeah, what are you yeah, making 20-25 million seems to be on the expensive side, and I think Napoli भी वही consider कर रही है. Billing का basically replacement is going to be Yunus Musa, yeah but एक चीज जो मुझे अच्छी लग रही है, it is the non-footballing reason that he is from USMNT, तो अमेरिकन प्लेयर है, तो वहाँ पे मार्केटिंग का कुछ हो सकता है उसको लेके. भाई वो yeah बस एक वो डायमेंशन मुझे अच्छा लग रहा है, बट ऑन फील्ड एज अ प्लेयर तो मुझे इतना आई एम yeah नॉट गेटिंग वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रांसफर. yeah I would rather be like भाई एक काम करते हैं थोड़ा जैम्बो अंगीजा को पटा के थोड़ा और उसका इंटरेस्ट बढ़ा दे नापोली में और उसी को रख देते बिकॉज Yeah, दिस स्क्रीम्स टू मी एज एन अंगीसा रिप्ले आई नो मोर कुड तू बोल भी सकता है बिलिंग रिप्लेसमेंट ये वो but this screams to me Angisa leaving if this happens this screams to me Angisa is going and Napoli is just having an insurance कि हाँ Angisa जाए तो हमारे पास प्लेयर रेडी है yeah, yeah, now then Conte has a task on his hand कि भाई मैं यूनुस मूसा को फिक्स कैसे करूं because यूनुस मूसा is a problem I'll be very honest with you again not the most intelligent player AC Milan में देख के as a neutral मेरा भी मैं देख के बोलता था भाई ये क्या है ये मतलब what am I watching on screen so yeah so but yeah Napoli Yogesh overall I will just sum it up by saying I think it looks exciting थोड़े डिपार्चर्स भी होंगे आपके अनवांटेड प्लेयर्स जाएंगे जियो सिमेओने ये वो साइरिल एनगॉन्ज आई थिंक विल लीव एज वेल and you'll have some good incomings. At least Napoli is active this time. Just to quickly yeah, close Napoli, this is what Conte said. I just wanted to show this very briefly.
Um, ये रहा, not this, sorry. This is what he said. Yeah, the meeting with De Laurentiis. What happened in January was, let's say, an open secret. There was things that during the year I was not happy about. Arrivals of players such as McTominay, Neres, Gilmore, and Lukaku in the final week. I did like how the situation was handled. Then there was another situation in January. I did a great job. He obviously वो खुद को praise करता है. That's Conte. That's Conte. But when you sign a contract, you accept both the burdens and the honors. When we spoke, they acknowledged the mistakes that had been made. And sure, the first year of a marriage can be rocky. Once I was reassured about Dick. About certain things, we decided to move forward because there's little to do. There's a title to defend and work to protect. So we know this guy had something cooking in his brain कि हाँ भाई मेरे को Yeah, guarantees चाहिए. But you yeah. have seen it. And It's I out. guess De Laurentiis ने काफी टाइम से एलेग्री के साथ में भी कुछ ऑफ द स्क्रीन तुझे टॉक्स मैं तुझे स्टार्टेड. बोला था मैं तुझे बोला था he was talking to Allegri because there were strong reports. So all the journalists they had basically तभी टेनिस के ओपन्स चल रहे थे रोम में, the Rome Open, and they spotted Allegri and De Laurentiis having a whole different conversation in a different area. So that then obviously you can Yeah, look at say कि general meeting है, but obviously उसके बाद rumors चालू थे. But good for you guys, obviously Conte has decided to stay because you need continuity at the end of the day. एंड या yeah, लेट्स सी व्हाट कॉन्टे डज. नापोली के बारे में हमने आई फील अच्छा बात कर ली है एक. मैं कमेंट्स में वापस आऊंगा गाइस. थैंक यू सो मेनी पीपल फॉर कमेंटिंग. आई नो आई एम सीइंग अ लॉट. मैं सब पे आऊंगा. एक बंदे का बस मैं कमेंट लेना चाहता हूँ. हाँ, इसका इंटरेस्टिंग यूजर नेम है. चुन चुन के लूंगा. बट या न्यू सब्सक्राइबर है इसलिए मैं इसका थोड़ा पहले ले रहा हूँ. थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग. आई होप यू कैन गेट मोर पीपल. बट टू आंसर योर क्वेश्चन योगेश, येस और नो, क्या बोलता है? no, no, no. नहीं नहीं, नॉट व्हाट यू वांट टू हैपन, वो नहीं मैं पूछा. डू यू थिंक Chiesa will join Napoli objectively? No, yeah, no. Objectively, I also don't think so it will happen. Fair. नापोली दिस टाइम विल बी फेवरेट्स. फेयर इनफ. आशुतोष मैं कमेंट्स पे आता हूँ सबके. डोंट वरी, डोंट वरी. सिमोने से सिमेओने या ये अगेन ये दोस एटलेटिको जोक्स कंटिन्यू. बट योगेश, लेट्स शिफ्ट थोड़ा फोकस. Yeah, yeah, आई वांट टू टॉक अबाउट this thing, Gattuso to potentially be the next इटली हेड कोच. अभी ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि इटली में इश्यूज थे. इटली नॉर्वे से 3-0 हार गई yeah. और फिर मोल्डोवा को ऑब्वियसली 2-0 हराया. Yes. सॉरी नॉट एंड 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 बट अपने को पता है बिहाइंड द सीन्स थिंग्स आर नॉट ग्रेट. Yeah, yeah. मैं लाइक समझ ही दे देता हूँ. तो basically Norway, Italy, Moldova, and there are two more, five teams are there in one group, and only the winner of the group gets automatic qualification यस ऑफ for कोर्स. the World Cup. And जो second finish करेगा, they'll go through qualification, additional rounds of qualification. जो इटली के साथ में last 2 बार से हो चुका है, top finish नहीं किया group में, extra qualification games में गई, and दोनों बार they ended up missing out on the World Cup. तो वो trend sort of Norway already had 6 points from 2 games. इटली को इतनी बुरी तरह से हराया 3-0, like done and dusted. फर्स्ट हाफ में गेम खत्म कर दिया लोग ने. इटली वर like completely messed in that game, and they are on now on 9 or 12 points. I'm not sure with the latest. देख देख ऑनेस्टली बोलूं तो थोड़ा ना मेरे हिसाब से जो पोस्ट गेम रिएक्शन था ना उस 3-0 का थोड़ा ओवरब्लोन था. बिकॉज मैं फैंस का बोला क्योंकि इटली ने एक ही गेम खेला है वर्ल्ड कप क्वालिफायर में. आई मीन Yeah, दो इंक्लूडिंग द सेकंड वन, राइट? एंड yeah, सेकंड वन यू ऑल वन. आई एम नॉट सेइंग इट्स yeah. ग्रेट बिकॉज वो गेम तो अगर आप हारते तो उस गेम में भी उस गेम में भी वो लोग ने पहले गोल मारा था. इफ यू रिमेंबर वो Yeah, ऑफसाइड के लिए cancel. offside के भाई वो लेके. तो या आई थॉट जब जब दे स्कोर्ड आई थॉट भाई इटली मतलब मोल्डोवा स्कोर्ड आया था. इटली ने क्या ही कर दिया इधर. But coming back to the point, I'll just pull something up just visually, for the people. Gattuso Yeah, is mostly going to be the एंड स्पलेटी का काफी जैसे लाइक स्पलेटी नापोली में भी था तो भी उसके लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो होते थे काफी यूनिक और काफी अलग तरीके से वो बात करता है. लाइक वो ट्रांसलेशंस में हमें समझता नहीं है, बट द वे ही स्पीक्स, लाइक कोई भी एक टॉपिक के ऊपर वो गोल 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 घूमता रहता है. लाइक हिज so प्रेस ये कॉन्फ्रेंस चीज. हैज वेरी वेरी Yeah. मिस्टिक So सॉर्ट ऑफ. so the thing with Spalletti is ना ये Spalletti के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो ऐसे रहते हैं. वो मैं इंटर में भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ. बट इन जनरल अगर तू कोई भी इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर को पूछेगा ना इटली में, लाइक कोई भी मीडिया पर्सन को, राइट, they या also struggle to interpret what Spalletti actually tries to convey because वो riddles में बात करता है.
वो थोड़ा philosophical, at least he tries to come across as philosophical, he tries, or if Yeah, he is not, so बहुत riddles में बात करते हैं, but that's not the issue. So basically let me touch upon the issue, क्या हुआ. आई थिंक इसके 2 साल में, इट्स क्रेजी टू थिंक स्पेलेटी को 2 साल हुए भी है एक्चुअली, अगर तू सोचेगा तो. आई फील yeah, देर वर पॉजिटिव मोमेंट्स, बट वो यूरोज में वो जो उसने किया ना योगेश, ही yeah, did not play to the strengths of the team. He was insistent with his system. और वो तू देखा, इट वाज अ कंप्लीट कोलैप्स. इटली वर बैड, yeah, इटली वर हॉरिबल yeah. ऑनेस्टली. Yeah. और उसके And बाद I remember हाँ, जिस दिन इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी उसी दिन इटली और स्विट्जरलैंड का मैच था. या तो या I was in एग्जैक्टली both places, सेलिब्रेट करूं इंडिया वर्ल्ड कप जीतने का या फिर इटली गेटिंग किक्ड आउट का थोड़ा सा एग्जैक्टली दुख. या एग्जैक्टली. और तुझे याद है अपन वॉच अलोंग्स कर रहे थे हर गेम के लिए, इफ यू Yeah, रिमेम्बर. yeah, 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 एंड याद है वो जब जकानी ने गोल मारा था विच अगेंस्ट क्रोएशिया, विच तब चिंतन भाई और तू, लाइक अपन सब, our reaction was crazy, but we knew deep down Italy is not doing a great job. अभी वो एक सीन हुआ, फिर उसके बाद भी इटली काइंड ऑफ थोड़ा रॉकी खेल रही है. दे डिड नॉट हैव गुड रिजल्ट्स इन बिटवीन. एंड actually let me just pull up Italy's results only, no, might as well, right? Let me yeah, just yeah. pull it up to A lot of just. fans a lot of fans said कि यूरोस के बाद में लाइक स्पेलेटी को सैक करना ही था, तो यूरोस के बाद में ही कर देना चाहिए था, बट हाँ देख देख, ऑनेस्टली अपन अगर ऐसे देखेंगे, चलो रिजल्ट्स दिख रहा है, होप दिस इज विजिबल अगेन. अगर तू देख 2-0 मोल्डोवा विन, 3-0. एक तो मैं तुझे एक एंड चीज नॉर्वे जर्मनी का के साथ में भी ये मैच कितना गंदा था यार, कैसे कैसे हाँ. गोल्स कंसीड किया था इटली ने. Yeah, and I'll be honest. Germany also have their own issues. Germany, या if you ask me, Germany have their own issues. They are also going up with this phase of the whole rebuild talent issue through the youth level and whatnot. But still, my point is Norway ना, Norway एक ऐसी कंट्री रही है ना योगेश, जिसमें कूट कूट के टैलेंट है. ठीक है, I know your Napoli was linked with या Antonio Nusa recently, और या अभी भी थोड़े लिंक्स है. वेरी टैलेंटेड प्लेयर. नॉर्वे में टैलेंट भरा है, बट ये लोग मेजर टूर्नामेंट सालों से मिस कर रहे. टैलेंट भर यस विद यस द टैलेंट, ऑलमोस्ट लाइक इटली. बट एक एक्सपेक्टेशन होता है इटली का और एक एक्सपेक्टेशन होता है नॉर्वे का. ऑब्वियसली नॉर्वे स्टिल आई, you expect them to qualify as well, but Italy you expect even more. And when I thought going into this game कि अगर इटली हारे तो ठीक है, चलो नॉर्वे is still a talent, but to lose 3-0 to Norway, या unacceptable, because Norway has disappointed on many levels in general football में. लोग सिर्फ नॉर्वेजियन प्लेयर्स के नाम देख के बोलते हैं ओ वेरी गुड टीम, एंड यस दे आर, बट नॉर्वे डिसअपॉइंट्स अ लॉट. एंड इटली लॉस्ट टू अ कंट्री दैट डिसअपॉइंट्स अ लॉट. लॉस्ट एंड नॉट जस्ट या लॉस्ट, थ्रैश्ड. वो भी यस. फर्स्ट 45 मिनट्स में योगेश. फर्स्ट 45 मिनट्स हो गया एंड द काइंड ऑफ गोल्स जो कंसीड किया था, लाइक पूरा डिफेंस वाज ऑल ओवर द प्लेस, कंप्लीटली या मिडफील्ड को बाईपास करके वेरी क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके कंप्लीटली वो होता है ना कि टीम को पूरी टीम को परास्त करके गोल मार दिया. यस यस वैसे वैसे यस गोल्स उन एग्जैक्टली. लोग ने स्कोर किए. एग्जैक्टली अग्री. एंड अगेन पीपल, अगर आप लोग भी थोड़े कमेंट्स करो कि आप लोगों को क्या लगता है इस गटूसो के अपॉइंटमेंट के बारे में, बिकॉज अभिजय ब्रॉट इट अप, बट आई वांट टू नो व्हाट पीपल थिंक एज वेल. इटली obviously lost to Germany in that one game, lost to France as well. So बहुत मिक्स्ड बैक था. एंड द इश्यूज आई बेसिकली टच अपॉन व्हाट स्पेलेटी सेड, कि उसका इश्यूज था कि he had issues with certain players like Acerbi, because उसका Acerbi, या उसके और Acerbi की जमती नहीं थी. एंड Acerbi called him out publicly. They had a phone call, they sorted it, but Acerbi still felt disrespected. So Spalletti also did not like that. उसके थोड़े बीच बीच में इश्यूज थे, because पलेटी ने Acerbi, बोला ही वांट्स टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम अचेरबी. वो स्पलेटी देख, स्पलेटी वही कैरेक्टर है. देख स्पलेटी, इवन आई लाइक जनरली स्पीकिंग ना, मुझे बंदा पसंद है, बिकॉज आई अप्रिशिएट व्हाट ही डिड एट इंटर. और उसका जब कभी कभी कैसा ना, जैसे तो बोला रिडल्स में सिचुएशन हैंडल करता है, वो कुछ भी कभी कभी आउट ऑफ प्लेस बोल लेता है रैंडमली. दैट्स व्हाट एट टाइम्स इज हिज ओन अनडूइंग. लाइक अगर तू देख उसने लोकाटेली का भी कैसे सिचुएशन हैंडल किया. आई एम श्योर इफ देयर इज एनी यूए fan in this chat, he, मतलब Locatelli has been good. Why does he या not feature more? Like, how do you know? And Samuele Ricci, I love the talent. I like the player, but honestly speaking, he has also not been good of late when he plays for Italy. Samuele Ricci. So you या consider all these things. And Spalletti बहुत rigid है selection में, you know. And I feel up. It was not his fault entirely. Let's be real. We know FIGC is a mess. ओर्सोलिनी को जब लेके जाना चाहिए था तब लेके नहीं गया. ओर्सोलिनी का Exactly. जब बैड सीजन था तब उसको बुलाया. Exactly. And let's leave the coach aside. ठीक है, coaches के problems होते हैं. Spalletti is gone. Okay. But what is the FIG? Look, FIGC के बारे में हम बात करेंगे तो और 3 घंटा लगेगा. हम लोग हमेशा बात हाँ करेंगे. यार, सही. ग्रवीना
ग्रवीना वी नो ही इज इनकॉम्पिटेंट, उसने स्पलेटी को हटाया, ठीक है, पर ये हम लोग वही बार बार बात करते हैं कि इटालियन फुटबॉल में वो यूथ स्ट्रक्चर, योगेश, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ होल इन जनरल, it's not just the young talent that is technically deficient or takes time to bloom, but वो जो coaches का system है, coaches are underpaid in Italy. I'm sure Swarnim Bhai is in the chat. He तो is involved in all this stuff. I didn't want to pull this up, but just to pull Swarnim's name, I know he's pulling Avijay's leg. But coaches are not paid, so coaches will obviously, that affects how they approach their, how they approach their teaching, how kids are impacted over there. उधर एक सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट है जो हिंडर होके रखा है, जो अपने जो इटली का वो यूथ सिस्टम ब्लूम नहीं कर रहा है, इसको देख रहा है Yeah, yeah, इटली में। ये लोग 25-26 ईयर ओल्ड को यंग टैलेंट, लाइक मैंने सेरिया का चैनल पे ना एक वीडियो देखा, योगेश, अलेसियो जर्बिन, तुम लोग का पुराना प्लेयर, राइट? yeah. He's 26 now, and they put up a video saying young talent something Alessio Zervin. I'm sorry, I know 26 is young in normal life, but in football terms, that's not young anymore. I'm like, तुम Alessio Zervin को कहाँ young talent बोल रहे हो? He's not even that good anyways. और it ये shocked me. FIGC को जो क्लब्स का लाइक इंटर का इतना अच्छा रन रहा है, लाइक जो पिछला चैंपियंस लीग रन था इंटर का, नापोली एंड मिलान वर आल्सो इन दी Yeah. क्वार्टर्स एंड सेमीज, तब FIGC कम्स आउट ऑफ द ब्लू, वीडियो बनाती है कि सेरिया इज बैक, फुटबॉल इज बैक, कैल्सियो इज बैक करके पूरा वो कैंपेन चलाते हैं, और जबकि ऑन फील्ड कुछ इम्पैक्ट नहीं था। दैट वाज क्लब्स देमसेल्व्स डूइंग, फाइट कर रहे चीजों से, फाइनेंशियली Mm-hmm. भी, ऑफ द पिच भी चीजों से फाइट कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट देमसेल्व्स। तो FIGC वहां पे आके ग्लोरी हंटर्स के जैसे कि ओ वाह वाह कैल्सियो इज बैक नाउ करके कैंपेन चला रहा है, जबकि ऑन फील्ड कुछ इनका इम्पैक्ट ही नहीं। स्टेडियम्स की क्या गंदी हालत है, कांट Yeah. FIGC डू समथिंग ओवर देयर? तो They इट्स are जस्ट they they are incompetent, योगेश, देखना, मैं वही बोलता हूँ। दे जो अजय भाई ने बोला था ना, इटली और इंडिया में बहुत सिमिलरिटी है, अब मैं वो डेप्थ में नहीं जाऊंगा, politically speaking, whatnot, but you get it, right? या Even in football terms, what India is going through right now, I know you're kind of new to it, Indian football as well, but कल इंडिया AIFF का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें जो AIFF का प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्लेयर कल्याण चौबे, he says we are going to fly down some world class striker to show the players demo on how to finish. Like क्या ये क्या क्रैश कोर्स है, क्या ट्यूशन है, क्या what do you mean you're going to fly down a player and show the team how to shoot and finish? Like you realize how insane that sounds in professional football. Like, या so that level of incompetence is there in Italy. They just don't get it. There is a youth system problem. There is a big problem. और अब problem क्या था, जब स्पेलेटी गया, they looked at रनियरी। अभी देख, रनियरी आया, एक तो कैलेरी को उसने जब बचाया था, ही रिटायर्ड फॉर गुड फ्रॉम फुटबॉल, वो या रिटायर हो चुका था। फिर रोमा ने या मेस क्रिएट की, रोमा ने उसको बचाने को लाया, उसने काम कर दिया रोमा में, ही इज सेट टू बिकम एन एडवाइजर एट रोमा, व्हिच ही विल बी बिहाइंड द सीन्स। या बट बीच में या फिर से इटली आ जाती है कि अजय भाई ने वो मीम पोस्ट किया था कि पानी लीक हो रहा है, उसने स्टिकर चिपकाया रनियरी के नाम का। मतलब भाई हर कोई प्रॉब्लम होता है रनियरी, एंड आई डू थिंक रनियरी वुड हैव बीन अ गुड चॉइस, बट आई फील इट्स, उसको रिटायर होने दो, शांति से उसको उसकी लाइफ जीने दो। या वो अपनी उसको लेगेसी क्यों खराब करे यार, इतनी अच्छी लेगेसी एग्जैक्टली है रनिeri की, व्हाई डज एग्जैक्टली आई ही फील, पुट्स या इट अप फॉर डिस्कशन अगेन? एग्जैक्टली आई फील उसकी लेगेसी खराबी। फिर दे टर्न टू स्टेफानो पियोली, व्हिच आई फील वुड हैव स्टिल या बीन, व्हिच आई स्टिल थिंक इज अ डिसेंट चॉइस, बट उसने भी सोचा होगा कि भाई मेरे को इस मैच में नहीं पढ़ना, मैं जाके फ्योरेंटीना कोच कर लेता हूँ, बिकॉज या ही इज बाय द वे गोइंग टू, ही इज वेरी क्लोज आई टू थिंक बिकमिंग। ऑनेस्टली इटली को थोड़ा सा ये अपने फेज से बाहर आना चाहिए था कि इटालियन कोचेस ही ढूंढने, जैसे ब्राजील में एंcelotti चला गया, इंग्लैंड का कोच इज व्हाट्स दैट गाइस नेम यार, योर जर्मन कौन है यार वो, सॉरी, क्या बोले? इटली इंग्लैंड का कोच है, ही टॉमस इज दैट टुकल, जर्मन, टॉमस जर्मन, टुकल। या टुकल, यस। तो इटली को भी ऐसा कोई फॉरेन कोच मूरिन्हो अवेलेबल था या फिर कोई और Yeah, कोच? so funnily there was an idea developing within the FIGC कि Mourinho to consider करना है, but they never really proceeded with it. Okay, या या but I agree कि maybe you could have looked abroad. You don't know, but the problem is, योगेश, मैं वही बोल रहा हूँ, the problem goes beyond coaching. It's infrastructure. It's the mentality at the top. हम यस लोग यस यस deep details कर सकते हैं, but we know it now. Let's look ahead. Gennaro Gattuso, यार, I don't know. देख गटूसो, लोगों का वो क्लीशे रहता है ना कि जो ज्यादा गुस्से वाला, नॉट गुस्से वाला, बट जो ज्यादा क्रिटिकल मैनेजर वो यूजुअली अच्छा करता है। लोग जब गटूसो स्टार्ट आउट भी किया था करे, लोगों को लगा था अरे अच्छा कोच बनेगा, बिकॉज ही इज गटूसो, उसकी पर्सनालिटी वैसी, ही इज नॉट अ या गुड कोच, या पीरियड, ही या इज नॉट डन वेल एनीवेयर। ठीक है, आई थिंक एट एसी मिलान इन द बैंटर एरा ही डिड एन ओके जॉब, बट उसका याद है
that season where he missed out on the Champions League by 1 point. उसकी गलती नहीं, again not his. I still feel that was a decent season, but overall his career has not been it, Yogesh. Like Yeah, yeah. I Definitely. remember even, Gattuso नापोली में जब था, नापोली मिस्ड आउट ऑन चैंपियंस लीग हाँ क्वालिफिकेशन. exactly, एंcelotti का रिप्लेसमेंट आया था, कोविड का सीजन था, कोपा इटालिया जिताया था बंदे ने, बट तो दैट वाज देयर. एंड yeah, ओसिमेन को भी कभी साइन किया था, गटुसो के अंडर ही साइन होके आए yeah, थे. yeah, नॉट but राइट. बहुत, I mean he's बट the बट mix. लाइक वो ट्रांसफर नहीं होता, लाइक उसका इंप्रेशन ऐसा है कि ही इज वेरी अग्रेसिव, को प्लेयर्स को मारेगा पीछे, प्लेयर्स के पीछे I लगेगा, बट दैट डज नॉट ट्रांसलेट्स ऑन फील्ड यार. वो सोल्यूशन नहीं होता ना हर चीज का, योगेश. टैक्टिकली ही इज नॉट द कोच. मैं वही बोलता हूँ कि जब वो स्टार्ट आउट किया था लोगों को वही था कि अरे हाँ ये अच्छा कुछ बनेगा, बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पर्सनालिटी इज, ये या पिटाई 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 करके अच्छा कुछ निकाल लेगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है हर टाइम. या ऐसे तो भाई हर कोच ना फिर अगले जो भी बडिंग कोच है वो अग्रेसिव बनेगा और अच्छा कोच बन जाएगा, राइट? दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. एंड Gattuso, I'll be very honest with you, even at when he coached, if I'm not wrong, AC Milan तो मैंने बात करती हूँ, Napoli touch upon किया. He was even the coach of Marseille at one point. He बहुत मैं जॉब किया. He was, या if you remember, he was actually लालिगा one. में शायद गया था, राइट? विलारियल वलेंसिया और वलेंसिया गया था. उधर भी ओके, आई मीन ठीक है. वलेंसिया उसको तो ब्लेम नहीं कर सकता. अगर तू वलेंसिया के बारे में कभी पढ़ेगा ना, वलेंसिया वाज अ मेस ऑफ अ क्लब एट दैट टाइम, सो वलेंसिया आई वोंट होल्ड हिम. ही वाज एक्चुअली द कोच ऑफ Fiorentina, बट ही वाज लेट गो even before he could coach a game. Yeah, this is like when अपना Marcelo Bielsa was made the coach of Lazio and he left before even coaching, because Gattuso Fiorentina coach बना था, but उसकी disagreements हुई obviously Rocco Camiso के साथ, और he left before he could even coach. Like यस. कितने दिन था, if I'm not wrong ना, Fiorentina में बोलता हूँ कितने दिन कोच किया. He एक was हफ्ते की, appointed 2 हफ्ते बस था, ऐसा ऐसा कुछ था एक करीब. हफ्ता, करेक्ट करेक्ट, एक हफ्ता, बिकॉज मई 2021 में वो अपॉइंट हुआ था लास्ट वीक में, एंड बाय या 1 जून, सॉरी नहीं, एक हफ्ता नहीं एक्चुअली, मई लास्ट वीक में अपॉइंट हुआ था, गटुसो का 2-3 हफ्ते, करेक्ट. सो गटुसो का एक बार मैं रीड कर रहा था, तो हिज एजेंट इज अपेरेंटली द सेम गाय हु मैनेजेस ज़ाल्टन इब्राहिमोविच. आई डोंट रिमेंबर हिज नेम. टाइम पे, तो उसका या लाइक एजेंट इज वेरी बहुत टॉप लेवल है, तो दैट्स व्हाई ही गेट्स सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. नहीं, वो तो वो देखो, वो हमेशा ना आजकल फैक्टर हो ही चुका है, राइट? या बट द पॉइंट बीइंग, your Gattuso, right? He was sacked in 2 weeks. The thing is, he's an okay coach. He's not ready. मे बी वो शायद कुछ कॉन्फिडेंस प्लेयर्स में इंस्पायर करे कि हाँ वो लोग प्लेयर्स देख के बोले अरे हाँ Gattuso ये वो. बट अगेन एज रिसेंट, अगर मैं इसकी रिसेंट कोचिंग स्टिंट भी देखूं, राइट, ही वाज कोचिंग हाइडुक स्प्लिट इन क्रोएशिया, ओके. उधर भी या डिड नॉट, क्या बोलूं, अगेन ही डिड नॉट डू अ ग्रेट जॉब. उसका पेरिसिच के साथ फॉल आउट हुआ. पेरिसिच लेफ्ट, पेरिसिच देख, पेरिसिच लेफ्ट, he went to Feyenoord and Perisic absolutely killed it at Feyenoord. लीग टाइटल जीता. चैंपियंस लीग में देख तू लेफ्ट राइट सेंटर गोल मारा. सो इट्स नॉट लाइक ही इज द परफेक्ट मैन मैनेजर. आल्सो उसकी मिसरीडिंग भी होती है सिचुएशन की बहुत. सो आई डोंट नो यार. आई थिंक इटली का ये तो मुझे लग रहा है लोग क्वालिफिकेशन Gattuso के अंदर एफ अप कर देंगे, मेरे को लग रहा है फिर. एंड दिस इज crazy if they miss out, because this is a 48 team World Cup. I'm sorry. या 48 टीम वर्ल्ड कप यूएस में हो रहा है. इटली, like there's such a big Italian population living in Yeah, USA. yeah, Yeah, yeah. And missing also, out 48 team World Cup, it will be a very, very big. and also, let me touch upon one thing before we close this discussion and go to comments. There is a playoff place, yes, but playoff भी आसान नहीं होता. एक again, Gattuso has to now in a short span of time win these games. एक टैक्टिकल आइडेंटिटी निकालने. Gattuso हमेशा जाता है 4-3-3 ऑफ शॉट्स के लिए, ठीक है. अभी वापस से Yeah, वही कंफ्यूजन, बिकॉज यू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ प्लेयर्स इन दिस नेशनल टीम जो 4-3-3 में चलते हैं, जो नहीं चलते, ठीक है. वो हर नेशनल टीम के साथ तो बोल सकता है, हो सकता है, बट ही हैज टू ले समथिंग डाउन. हाउ आर यू ट्रस्टिंग अ कोच that has not delivered on so many occasions, that has done an okay job, delivered बहुत patchy है basically, जो अपन बोलते हैं ना, not in 50-50, I would say 40-60, obviously being the bad. So much less than that. Yeah, much less than that. yeah, मच मैं उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहा है वो भी, ऑनेस्टली, बिकॉज वो थोड़ा इटालियन फैक्टर है, शायद फाइनली कुछ काम कर जाए, बट ऑनेस्टली मेरे को लगता ही नहीं वो कुछ नहीं. बहुत Yeah. साल हो गए उस चीज As को. an Italy fan, yeah, like I have been a lifelong Italy fan. This is not an appointment This that is not excites me at all. Yeah. this is not good. This is not good. This should not. If Yeah. anybody is getting excited about this, I would be worried about. I'll be very honest with you. So yeah, I mean,
Italy is a mess. FIGC is a mess. Nothing new there. Let me take a few comments, Yogesh. थोड़ा और transfers discuss करके then we'll close the stream. Yeah, Como moving strong. Yes, so Como ने मार्टिन बटुरीना को साइन किया अभिजय. Martin Baturina Yogesh is one of the best top 3 under 23 talents coming out of Croatia. Peter Sucic जिसको हमने साइन किया वो और बटोरिना डिनामो जाग्रेब में they used to absolutely kill it and they are very good friends also. And Como मैं बोल रहा हूँ they held off योगेश सेस्क फैब्रिगास के लिए लेवरक्यूजन आया. Fabregas yeah. and Como rejected Leverkusen. Leipzig came. Fabregas and Como rejected them. Roma came. Como rejected them. Fabregas had kind of wanted to go to Roma, Mm-hmm. but Como stood their ground. Inter pushed the hardest, but Yeah, Inter also played very soft कि मैं भाई Como से permission लेता हूँ. मैंने जैसे बोला उस मेरे rant video में, this is not a school where you go and take permission. If you want something, you go and chase it, right? आप permission लेते नहीं बैठ सकते relations maintain करने के लिए. But that's besides the point. Como is a club I would keep an eye out because Fabregas ने बोला था they will aim for stability then maybe the season after, but I feel they could still make a European push because अगर उनको उसके signings मिले ना योगेश, this is the richest club in Italy we are talking about. Let's मैं yeah, अपन योगेश तू और मैंने बहुत डिस्कस किया कि they are not going to go crazy on the market, but this is still there is a financial guarantee. This is a club, तू जो American factor बोला ना, this is a club linked to Hollywood. All the Hollywood's biggest stars have their yeah, houses in Lake Como and all this. This is a yeah, club that gets all mega stars for watching their games. This is a club where all rich people have their shares, whatnot. Fucking Rafael Varane जो जिसको साइन किया था इंजर हो गया अभी वो बोर्ड पे है सीधा. This is that kind of a club. They're already getting a new stadium. They're already working towards it. They will make moves and I'll be I'm telling you everybody has to be careful of this. Yogesh, they started their season terribly but they ended 10th place after promotion. yeah, That's yeah, madness. That is insane. Even if they've spent 100 million plus, which they have, they've almost spent as much as you guys or more, I would think. yeah, Just as much yeah, as you guys. But फिर भी 10th place, Fabregas को secure करना 2028 तक to put off 4 clubs. That is not a joke. That is not a joke. So kudos to them. They could probably make Europe. And honestly, Yogesh, I want to see because I think the project is very interesting. I want to see them do well. Uh, what about Pablo Torre? कैन यू प्लीज आस्क द क्वेश्चन. हाँ सो ये एक अलग अजीब सिचुएशन हो गया इधर अश्विन एंड इंटरिस्टा. योगेश क्या हुआ ऑब्वियसली द इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट राइट. So Taremi had yeah. obviously gone for national team duty and he had to stay back for some awards as well. अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है with the club world cup obviously Inter is in USA but he's stuck in Iran. He's unable to leave Iran because of Mm-hmm. airspace has been blocked. So Inter is working with Iran to try to get him out of Iran but it's very difficult now. So there is news that apparently उसको शायद रोड से निकालेंगे कोई नेबरिंग कंट्री में डालेंगे और उधर से फ्लाइट कुछ तो करना पड़ेगा. But it's a very hope for his safety. I mean, at the end of the day, you Yeah, don't want it to happen. yeah, So, yeah. whatever it is, क्या बोल रहे हो इसको चांस है मेरे को तो नहीं लग रहा अभी इतने I मिनट. don't think so. I think that boat has sailed. Like Kawara का Yeah, पैसा मिला था, Napoli were interested in investing that. वो हुआ नहीं. I don't think so. Garnacho is coming now to Napoli. yeah. I'll just take a few comments, then we can discuss another matter. Sorry, yeah, no worries. Marianucci हमने discuss किया. So I am nice to have you as always. 9 गोलन वाला DP बहुत बहुत interesting है. अजय भाई खुश हो जाएंगे देख के. ये भी देख लिया था. Sorry. ये I think this is a full twist on the words we have made, and I feel this is not fair. I mean, full एक तो मैं चीज पहले बोलूंगा योगेश when PSG won. एक तो I think they won. They deserve to win the way they thrashed us. Obviously, they were the better side. Nobody said Quara's career is over. By the way, we just said कि we had two perspectives. योगेश जब याद है जब क्वारा अपने पूरा वीडियो किया था when he left, where both of Yeah, us said I feel he could have built up legacy at Napoli, but fair play to him. There, we also said at the same time, by the way, कि we understood. तुझे याद है मैंने बोला था कि I understand why Quara left because of the Osimhen situation, and he did the yeah, at the end of the day he's benefited because वो बहुत सारे medals लेके गया है. Scudetto वाला भी, Champions League भी. A, so that's a twist on words. B, by the way, I never said I was never overconfident. A, and I never undermined what PSG did. I think I said PSG are the favorites going into it. So this is a complete twist on words of what we have said. You can go back, watch the preview जो मैंने 10 मिनट के लिए ज्वाइन किया तो तुझे याद है अंकल शर्मा था उस पे योगेश. You were there as well. I clearly said I feel as, and by the way, as a fan, I have every right to be optimistic. I mean, I can believe in my team if they are in the Champions League final. So look, man, kudos to you guys. But if you're going to twist words, at least मतलब ऐसा कोई एविडेंस प्रोवाइड करो वो भी नहीं आपके पास. सो अगर आप ट्विस्ट कर रहे हो ना there is no need to twist and don't make stuff up. PSG deserved the win. I think 5-0. There yeah. is no PSG question. deserved the win, and Kawara ka performances were also like very good. Yeah, like
I remember that run. Like I was like we all watched the match. 4-0 up Yeah, थी and Kawara made that defensive run पूरा like पीछे भाग के आके he pulled yeah. off the ball. So it's all down to Kawara's work ethics. Yeah. Like Yeah, usually even see exactly. Quara has been great, and see usually I don't get bothered by comments like these, and मेरे को bother नहीं हो रहा. The only thing is this is a pure twist on what we've actually discussed. That's what I'm finding funny because everything, if you go back to any video we have said उल्टा इसका. I think मैं PSG को regularly देखता भी हूँ, so I don't know what you're on about. So I hope you can change your perspective and come back to this. I'm not going to ban you or anything, but please don't lie about what we say. We don't appreciate that. We appreciate everybody's perspective. So प्लीज झूठ मत बोलो, जो है वो बोलो. You can criticize us for our views, but not for what we have not said. So please don't come up with all this. Param Bhaiya, how much possibility do our club have signing Waltermar, Hoyland? भाई भाई ये क्या सुपर मार्केट नहीं, इतने प्लेयर्स खरीदने के लिए पैसा नहीं है अपने पास. हॉयलैंड wants to stay at Man United and I'm not a fan of that player personally. एडरसन के लिंक से इन केस हाकान लीव, सो योगेश देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गैलेटासराय जो कर रहा है ना, ओसीमैन खरीदना है उनको, yeah, लीरॉय साने किया, yeah, जो yeah, गवर्नमेंट पैसा, जो उनका पैसा है जो भी है, उससे उनको हाकान भी चाहिए. अपेरेंटली दे माइट मेक एन ऑफर वेरी सून. सो इन केस दे लीव, इंटर माइट consider Ederson, but that's not going to be easy. Walter Mada is a very interesting talent, but I don't think he's a strong option. मैं बोलता हूँ योगेश, you guys were linked with this player, and Gion Boni of Parma. याद है पार्मा का बॉनी, जो स्ट्राइकर जो कॉन्टे को पसंद है. yeah, ही yeah, इज वेरी क्लोज टू इंटर, ही इज वेरी क्लोज टू इंटर, आई कैन टेल यू. उसका पार्मा के साथ बहुत कॉन्वर्सेशन हुए, और कीवू बीइंग द कोच नाउ, फॉर्मर पार्मा कोच, ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग लाइक 2-3 पार्मा प्लेयर्स. और उसी दिन मैं वही बोला अपने स्ट्रीम में भाई कि कीवू को लाया पार्मा से, ठीक है भाई, मतलब पूरा पार्मा मत उठा के लाओ, मेरे को एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है. मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लाइक वी नो योगेश Parma's talent is very exciting, but there is a yeah, reason they're inexperienced. You can't have so much inexperience in your team. So भाई मतलब if you're yeah, getting one more Parma player ठीक है, but भाई पूरी टोली मत उठा के लाओ इंटर में पार्मा की. मतलब भाई एक लेवल मेंटेन करना है. लाइक अरे मैं वही वो बोलता याद हूँ. है क्या, लाइक सारी को जब एम्पोली से साइन किया था नापोली ने, तो सारी हाँ, अपने बेटे बेटे नहीं, जब बेटे जैसे प्लेयर वेल्डी फ्योरी था या इटालियन, या या उसको उठा के लेके आ गया था. एग्जैक्टली, कुछ ये कुछ मुझे उल्टा गुस्सा आता है. हुआ था. ये मुझे गुस्सा नहीं देख, एक होता है ना, मुझे पता है बॉनी इज अ टैलेंटेड प्लेयर. तू जानता है जियोनी लेओनी करके भी डिफेंडर है पार में, बहुत टैलेंटेड है. ये सब नेम्स हम लोग ला रहे. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, बट द प्रॉब्लम इज देयर हैज टू बी एक्सपीरियंस व्हिच इज देयर एट इंटर. दैट्स व्हाई आई एम नॉट एज नेगेटिव एज व्हेन एसी मिलान वाज, व्हेन ऑल दे मेड दीस चेंजेस एंड दे सफर्ड. माय प्रॉब्लम इज यू कैन हैव टू मेनी यंग प्लेयर्स. वो पार्मा, तुझे याद है प्रीव्यू में हमने डिस्कस किया था, पार्मा हैज टू मेनी इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स and they should not really have been in that relegation fight, but they did not have any experience in the team and they Yeah, were caught yeah. in the relegation battle. So भाई मेरे को इतने सारे पार्मा प्लेयर नहीं चाहिए मेरे टीम में, मतलब कुछ तो एक्सपीरियंस दो यार. Last two comments and then we'll discuss another topic which I want to. But जेलेंस की डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन में है, यानी he has to stay fit. अश्विन अभी तक वो कर नहीं पाया. We need these guys to step up now. But Yeah, yeah. Mukesh, let's discuss something else. थोड़ा मैं तेरे साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ. Modric to AC Milan is Hmm. happening, and actually Modric has been a lifelong AC Milan. मतलब he grew up as an Milanista basically in his young days. अगर तूने कोई उसके पिक्चर्स देखे होंगे ट्विटर या किसी पे, he grew up as an AC Milan fan. Finally, for Milan fans, he has been linked with Milan in the past. There was a point where Inter tried to sign Modric, which was very funny saga at that point. But finally, he's landed at AC Milan. क्या बोलते हैं योगेश, टू लेट? एंड मिलान फैंस और जनरली सब लोग मेरे को कमेंट्स में बोलो, हम सब ने एट पॉइंट सम पॉइंट योगेश मॉडरिच को देखा है खेलते हुए, वर्ल्ड क्लास. ये Yeah, जब वो योगेश, एक चीज बिफोर यू से, व्हेन ही फर्स्ट साइन फॉर रियल मैड्रिड, एवरी दैट द सीजन द वे इट वेंट, पीपल कॉल्ड हिम अ फ्लॉप. hmm. That's insane to think, to even at that point call Luka Modric a flop. And now Yeah. look, he's a world class. He's elite. Forget world class. He's elite. He's world class. He's everything. And he's finally coming to AC Milan, but too late. योगेश क्या बोलता है? Too late or it's okay, हो जाएगा मैनेज ऐसा टाइप, और will he I do well? guess थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए. लाइक एसी मिलान विल बी प्लेइंग वन गेम अ वीक. खाली कोपा इटालिया एंड सेरिया Yeah. रहने वाला है. I don't want to rub salt in the wounds, but that's the truth. And Allegri is he has a certain level here. He's a good manager. We cannot Yeah. say that Allegri is down the rut or ये वो कुछ बोल नहीं सकते. He knows how to get the best out of his players, and कौन सा एक playing उसका identified एक playing style है Allegri का, right?
So I guess with one game a season, one game in week, I guess Luka Modric, yes, 39 years ka ho gaya, hai, but we are seeing footballers' age being extended. Like Cristiano Ronaldo still Hmm. playing at such an age, contributing. I don't want to flame up the comment section, but he is doing good, right? Luka Modric also, I guess, international duty pe he scored a goal as well, if I'm not wrong, Yeah, he did. He had a good game against Czech Republic. You're absolutely right. right? So I Yep. guess it's never too late, yeah. Like, and you don't know, players can, as long as they have that desire, as long as they have that fire. I guess he can give one good season to AC Milan, and वो games को जो unlock करना रहता है, like, right, AC Milan के पास में they have Rafael Leao to unlock very complicated games, like chances बनते नहीं है. Rafael Leao comes in and he uh, makes a goal on his own and score, makes the team win that match, right? तो वैसा sort of Modric वैसा type का player है, like that on his own he can unlock very difficult games. So I guess Yeah, it's absolutely. going to be a very good signing. Yeah, and see, मैं जो बोल रहा था, this is, I hope this is visible on the screen. Yeah, ये है Yeah, Luka Modric as a kid, so he obviously loved Milan, and I agree with you. So Piyush in the chat has said as well. Yogesh, if you can pull that comment थोड़ा नीचे है. But yeah, yeah, Piyush in the chat has said कि Modric was kind of one of my, second best. Yeah, you can say so, but he was very still at a very good level. He operated, and this is despite his age. He's elite. मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के. I feel yeah, जो तू जैसे बोला ना कि वो मिलान कनेक्शन विद देम प्लेइंग वन गेम अ वीक, आई थिंक मैनेजेबल हो जाएगा, एंड आई थिंक इल एक्चुअली बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसी मिलान. ये मेरा प्रिडिक्शन है. ये मेरा प्रिडिक्शन है कि जैसे तो बोल रहे हैं ना कि अनलॉक गेम्स, देयर वर मोमेंट्स वेरी अनलॉक गेम्स फॉर रियल मैड्रिड. आई मीन, again they have, again, will he be useful of the ball and whatnot, that remains to be seen. But you need these kind of players, okay? This is what Milan has been missing thoda. Just that mentorship, okay? Just that guidance point of view for these players they have. तो अगर से yeah. देखा जो the way last season went, this kind of a signing I feel has added value, not just on the pitch, off the pitch. To get someone like a Rafael Leao back on track mentally, not the same position obviously, but just from a locker room perspective. um, Mm-hmm. उनका मिडफील्ड जो मेस है, it's not the greatest, but वो creativity, वो जो vision लाएगा, जो the way he will be able to, he scores from distance as well, even to date. So I feel this is a very very, and I would say very very good, but I feel this is a good signing considering where AC Milan है. जैसे तूने context बोला ना, considering that this is fair. I do see that comment by RS जो मैं pull up करने वाला हूँ, because he's a Milanista. Yeah, for the leadership we are too late. He is not agreeing with it, which is fair, because even with Allegri, that is a whole different matter, which is a bit this thing as well. कि Allegri भी, is he the guy who's who he was in the past, देखा जाएगा. But I feel पेपर पे देखो, अगर थोड़ा अर्ली सेंस देखो, मेरे को लग रहा है अच्छा है. तू डू यू अग्री विद इट योगेश? डू यू थिंक इट्स फाइन? डू यू थिंक दिस विल बी Yeah, इंपॉर्टेंट? डू I agree totally. Like, it's a free transfer. Modric still feels that Tony Cruz जैसा retire नहीं हुआ Modric, right? He still feels he has got some gas left in him. So I guess it's going to be a very interesting watch for AC Milan. फेयर इनफ. मैं थोड़े कमेंट्स ले रहा हूं, देन विल जस्ट डिस्कस अ फ्यू मोर थिंग्स एंड क्लोज दिस. ही इज अ लो रिस्क साइनिंग, सेज चुन चुन के लूंगा एज अ मटर पानी विल कुक आवर क्लास बेस्ट मिडफील्डर. फेयर इनफ. बाकी के कमेंट्स भी ले रहा हूं. um मैं कहाँ रुका था, मैं कहाँ बहुत पहले रुका था. वेट, न्यूज ये तो मैंने ले लिया था. आ, के केडीबी और लगा का तबाही कर देंगे सेरिया में. फेयर इनफ. Napoli's time to dominate Serie A. Do you think Conte will take the CL monkey off his back? ये यही हम डिस्कस करें. He has to. We'll see, but he Yeah. has to. बस हो गया अब भाई, बस बहुत बेनिफिट ऑफ द डाउट हो गया. बस हो गया, अभी इसको करना ही पड़ेगा. वेयर इज वेयर इज हाँ, ये इधर से करेक्ट है. फाउंड इट. इट्स टाइम फॉर नापोली टू डोमिनेट. हो गया, ये भी हो गया. टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक मॉडरिच विल ब्रिंग मोर आइज टू द सीरियल. लेट्स सी इफ आई कैन. हाँ, ये भी है, ये तो है. मॉडरिच इज गोइंग टू Definitely. ब्रिंग a lot of eyeballs. And रियल मैड्रिड एसी मिलान फैंस का एक अच्छा रिलेशन इन जनरल है, वो तो और भी स्ट्रेंथन हो जाएगा इन दैट सेंस. सो डेफिनेटली इन दैट सेंस अ बिग साइनिंग. एंड I personally always had this kind of soft spot for Croatia, so good to see a lot of Croatians in the league. Baturina, Petar Sucic in my team. Finally, Brozovic के बाद एक Croatian आ गया. और मैं
like it's just good to see a lot of Croatians. I know Napoli का उतना Croatian connection नहीं है योगेश, but I don't know Yeah, what it is. But yeah, it's a they do obviously produce some good players. Wait, this is where I stop. Conte can fix Musa, but 25 million never. This is a fair point. कि 25 million बहुत yeah, पैसा होता है for yeah. an Italian club. Mr. Allegri with no Europe and his son Rabio. Rabio नहीं आ रहा है. Rabio तो नहीं आ रहा, but I सस्ता don't गेमर. think so. ये Rabio नहीं आ रहा, but योगेश just yes or no और brief thoughts देना तो दे. अगेन इतना सिंपल नहीं होता कि वन गेम अ वीक सब एकदम फेवरेट्स बन जाते हो बट do you think there's a chance for these guys give it again because it's too early we don't know what kind of market they are going to do properly Vlahovic killing से ये वो but क्या लगता है तुझे early sensations क्या लग रहे हैं they should they be considered in the title race. I guess the top four definitely Milan top four के लिए Champions League positions लिए definitely very strongly fight करेंगे. But title के लिए it's very risky है like you have to एक तो दो पॉइंट्स आते हैं सीजन में एक जनवरी में क्या सीजन क्या Hmm. सिचुएशन है और देन अप्रैल में क्या सिचुएशन है दोज डिफाइन द सीजन यार तो आई गेस इट्स वेरी वेरी अर्ली टू से लाइक वी हैव टू सी एंड लॉकर रूम में बहुत सारे इश्यूज है लाइक राफेल लियो थियो हर्नांडेज ये सब के बहुत सारे माइगनन का भी रूमर्स है दैट ही विल बी मूविंग ऑन तो लॉकर रूम महीने एग्जैक्टली एग्जैक्टली यू आर राइट एक तूने थैंक यू यू रिमाइंडेड मी मिलान में लेट्स टॉक एसी मिलान थोड़ा आई नो चिंतन भाई इज नॉट हियर he will be back soon he has some personal things to take care of but ईसी मिलान में पूरा रेवोल्यूशन हो रहा है योगेश लेट्स टच अप ऑन दिस थियो या हर्नांडेज वाज क्लोज टू लीविंग फॉर एटलेटिको मैड्रिड the हम्म move fell through not happening he's still considering other options he's rejected Al Hilal because he wants to stay in Europe. Theo या Hernandez का attitude issue in the sense वो दिख रहा है कि he's not in this project that can still change minds change होते हैं but as of today he's more out than in ऐसा लग रहा है but यस still now after Atletico Madrid we don't know where this guy is headed. Mike Maignan was close to Chelsea that also fell apart because the clubs could not agree on a fee. या अभी वो भी एक इशू है मे बी दैट ऑल्सो चेंजेस बट क्या मतलब they are trying a rebuild also but there are roadblocks and Yogesh you brought this up I feel Milan's title ये जो early चीज हम बोल रहे हैं this really depends on finally them getting a market right for, because for years Yogesh now for the last few years they've been getting their market wrong for the most part. जनवरी में कितना वो पुराने मार्केट से छोड़ो जनवरी में कितना हेवी इन्वेस्टमेंट किया एसी मिलान ने बट दे स्ट्रगल्ड कंप्लीटली वेंट ऑफ ट्रैक यार कुछ देखिए ना जॉ फिलिक्स को साइन करके मतलब तुम उसको उसके बाल काका जैसे होंगे उसको तुम काका बोलोगे तो मतलब यू गेट द पॉइंट राइट इज नॉट द प्लेयर but point is these guys have to get serious. Allegri was step one. I feel their biggest signing regardless of what happens right the biggest positive is signing Iglitare जो तू जानता है Iglitare लाजियो में कैसा था. Is he the greatest? I'm not saying he's the greatest sporting director made in Italy. बट एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आता है उसके साथ मतलब मिलान का तुझे जानता है स्पोर्टिंग डायरेक्टर जो था ज़्लाटान एक चीज करेगा फुरलानी एक नॉट फुरलानी नॉट दैट फुरलानी इज अ डायरेक्टर मोनकाडा एक चीज सब लोग अलग चीजें कर रहे थे विद इग्लितारे यू हैव अ रेफरेंस पॉइंट you have a director who is bringing a plan who moved quickly on Allegri who's moving on different targets. Iglitare is not perfect he has his flaws उसका ट्रैक रिकॉर्ड है ज्यादातर ईस्ट यूरोपियंस को साइन करता है just he just loves the East European market for some reason whatever it is he has flaws as well but at least now AC Milan have a director who's taking control of things for me regardless of what happens that's the biggest signing because Milan में direction नहीं था so step one most important signing getting Iglitare was getting the direction in the club and that's the biggest signing now let's see where they go they're linked with Vlahovic does not inspire confidence Yogesh क्योंकि अपन जानते हैं Vlahovic is not it like या he's good but वो बहुत not and worth the and Juventus will not be giving any discounts as well. I don't think so. They will. नहीं नहीं भाई वो एसी मिलान ने उल्टा करके कलूलो को दे दिया उनको बट यूवेंटस इज नॉट गोइंग टू डू एनी फेवर्स देयर आई एम प्रीटी Yeah, श्योर Napoli need obviously Milan you have a great relation as on like whatever it is but it's not going to be that easy. Napoli need to invest हाँ ये एक प्रॉब्लम है Napoli में their youth yeah. oh, Youth players after Insigne, there is no the big name. academy training facilities are not good in Naples. Yes, we know the south of Italy is poor, but they need to change something. De Laurentiis needs to invest in that. And Napoli की youth teams बहुत relegate होती है youth leagues Yeah, में yeah, बहुत yeah. often relegate होती है. Milan will get a gem if they actually sign Javi Guerra. Yes, they are linked with Javi Guerra. He needs the move from Mestalla. So Javi Guerra करके clear है योगेश very very Mhm. good. I think the profile makes sense. Satvik good shout there.
This is also a fair point though. This is also a fair point कि not sure if Allegri is the right coach for Javi Guerra, but देखते हैं. Do you think we should sell Bisek to one of the Prem mugs and get Scalvini for a long-term HLV replacement at CCB? Darmian for one more year. Deck yaar Ashwin, Bisek na. Yogesh, so basically the links here are that Bisek could be sold if a Premier League club makes a suitable offer. Now, यूथ नहीं, यंग प्लेयर्स गलतियां करते हैं. लाजियो के अगेंस्ट उसका जो हैंडबॉल हुआ, ही मेक्स फ्रीक्वेंट एरर्स, बट ही स्टिल आई फील ही इज आल्सो एट पॉजिटिव्स. नाउ अगर कोई 40 मिलियन दे रहा है, 30 मिलियन दे रहा है, देन योर हेड टर्न्स एंड यू हैव टू कंसीडर बीइंग एन इटालियन क्लब, राइट? But Scalvini, Ashwin, Scalvini and all are very difficult targets. Atalanta is not going to settle easily, right? So Yeah, you have to yeah, think who is going to be that replacement. If you have a good replacement in hand, then yes, you cash in. If you don't have a good replacement, डार्मियान भी अभी रिग्रेस हो रहा है. देख, आई लव डार्मियान, मेरे इंटर जर्सी पे पीछे डार्मियान लिखा है, जो भी मेरे पास है वो. yeah, yeah. बट यू हैव And टू मूव. and Scalvini का I guess हमें Spinazzola and Chiesa situation से learn करना चाहिए कि after such major injuries, players are not the same. Yeah, एग्जैक्टली, they are not the एग्जैक्टली, वी same. नीड टू फर्स्ट सी वेयर स्कल्विनी स्टैंड्स आफ्टर द एसीएल. उस पे तुम 50 मिलियन उड़ाओगे और फिर ही इज नॉट द सेम प्लेयर एनीमोर, देन यू आर एफ्ड, यू आर एब्सोल्युटली एफ्ड. सो यू हैव अ वैलिड पॉइंट कि बीसेक पे शायद कैश इन कर सकते हो आप, but you have to be wise about the replacement. You can't f that up. What is AC Milan doing? Their main players want to leave, signing and old Modric. ये भी एक तरीका है देखने का योगेश. But Roshi let them see. Look, Theo Hernandez. I don't think his head is in it. Roshi football. So they have to also move on, right? Italy and national team is doomed. Swarnim Bhai, you I'm sure can relate, being an Azzurri fan, and you as someone who's connected with the country in many ways. Gattuso will kill players, but can he coach properly? That's the question. प्लेयर्स को मारो अब, बट आप कोच कर सकते हो, पहले वो बताओ मुझे. Yeah, exactly. I think me and Yogesh are on this boat, and Yogesh is more of an Azzurri fan than me. I'm not an Azzurri fan. I just have a soft spot because मेरे को इटालियन फुटबॉल पसंद है. आई सपोर्ट एन इटालियन टीम एंड या इट इज डिसअपॉइंटिंग. एब्सोल्युटली 100%. मैकटोमिनी के गोल्स और असिस्ट पर डेब्रोइना, ये डिस्कस करते हैं जगसीर हम लोग थोड़ा बाद में. फिर से थोड़ा सर्कल बैक करता हूँ, मैं स्टार कर रहा हूँ आपका कमेंट. मुझे थोड़ा डिफरेंट ट्रांसफर्स भी डिस्कस करने. हमको क्या इटालियन टैलेंट माल्डिनी रीजन बोल के वॉकिंग एम्बुलेंस वो डबल जब इज टॉकिंग अबाउट कालाफियोरी. देख, कालाफियोरी का अनफॉर्चुनेट केस है. ही इज एवर सिंस हिज मेजर इंजरीज ही इज बीन अ बिट इंजरी प्रोन. अभी जब मैं एक चीज बोलूंगा, क्वालिटी आप मत डाउट करो उसकी. इट्स नॉट द इशू, द इंजरीज. यस, आई एग्री. Yogesh, Arsenal signed Kivior from Spezia, if you remember. Hmm. Kivior was good at Spezia, and initially Kivior went there, did not get game time. ऐसा लग रहा था बिक जाएगा. There were Serie A clubs trying to sign him back, and suddenly Kivior became important again for Arsenal. So all I will say is, Abhijay, give him time. I know it is an injury issue, but whatever. 26 is 17 in Italian years, fair enough. Yes, Abhijay. Como is on fire. Como, I would say on paper at least, is on fire. So kudos to them. And I know you don't like Fabregas, but fair play to him also for staying put. West Indies of football, great history, but they're underperforming, also inconsistent. That's a fair comparison, Smokey. मतलब हिस्ट्री में ही सब अटका है. रनियरी इज रॉय हॉडसन ऑफ इटालियन फुटबॉल. हर बार रिटायर होके वापस आ जाता है इंटर लेजेंड. अगर मंचिनी अपॉइंट कर दे तो मंचिनी को, यार ये भी सोल्यूशन नहीं लगता है ना. ये मंचिनी को नहीं मंचिनी यार. को मंचिनी को वापस लोगे तो उसका ईगो बूस्ट होगा. आई वाज राइट. Yeah, yeah, And Mancini is that kind of a person, Yogesh. If you know Mancini is that kind of a person. So, yeah, Gattuso is such a bad appointment. He was sacked by Marseille. Yes, he was. Sometimes maybe good, sometimes maybe, of course, shit. Gattuso के बाद Fabio Cannavaro आएगा, the manager who got sacked at Dinamo Zagreb. ये अच्छी ट्रोलिंग है. अभी क्रोएशियन लीग से ले आए मैनेजर. Yes, Sam brother. ये 2009 नहीं, 2001 or 2 season है. Fernando Torres at the back. I don't know if you'll be able to see it, but yeah. Mino Raiola obviously being the agent at the time. Italy is too talented to miss. Too talented नहीं. Their talent है, but they're stubborn, they're idiots, they're foolish, they're everything. That is bad. And that's why they miss out. And if they miss out on the 48 team World Cup ना, ये मैं पक्का जब if they do, Yogesh, I'm telling you, जो स्ट्रीम अपनी होगी ना, मैं वो स्ट्रीम में सिर्फ क्वेश्चंस पूछूंगा. I want the whole panel on that stream. DJ Bhai, I want Ajay Bhai, Chintan, you, Kaustubh, Bitul, everyone. And I will let you guys rant on it if Italy misses the World Cup, because
दैट शुड बी लाइक अ 3-4 hour लॉन्ग रैंट, उसमें Yeah. आप पूरा थीसिस ही लिख दो व्हाट इज रॉन्ग विद इटालियन फुटबॉल। और कैसे होता है ना, जब अपन थीसिस लिखते हैं कॉलेज में, अपन एक ड्राफ्ट बनाते हैं, दूसरा ड्राफ्ट बनता है, तीसरा ड्राफ्ट बनता है, फिर फाइनल थीसिस सबमिट होता है, राइट, मंथ्स डाउन द लाइन योगेश। इसमें कुछ ड्राफ्ट नहीं बनेगा, इसमें जो पहला ड्राफ्ट होगा वही फाइनल ड्राफ्ट होगा, और वो तुम ना ग्लोबली कहीं भी सबमिट करना है, किधर भी सबमिट करके डिस्प्ले करवा सकते हो, उसको 5 स्टार रेटिंग मिलेगा, ऐसा थीसिस होगा वो, if Italy miss out on the 48 team World Cup. Valencia has been a mess of a club since Marcelino left after winning the Copa del Rey. We have got a good manager now and young players, but Peter Lim is a clown. So that's why, yeah, that's a Gattuso spell in relation to that. You can't really blame him there. Cesare Prandelli, Italian former, तू जानता ही होगा. So there is, तुझे पता, Yeah. Cesare Prandelli is in talks to become a director in the Azzurri so that he can help youth football. I actually like Prandelli, Yogesh. वर्ल्ड कप खेला है भाई ने। इटालियन कोच हु प्लेड वर्ल्ड कप काफी रेयर कमोडिटी है अभी। हाँ, so नहीं, but I I do think Prandelli would be kind of useful. उसका जब he is not been in football for a while, Yogesh, if you've noticed, Prandelli actually was a very active coach in Italian football, very हम्म। synonymous with Fiorentina, but उसको थोड़े I think personal issues थे, mental health issues थे, इसलिए. So I hope he's recovered from that and he's fine now. And if he comes back, I think that would be a crazy appointment. I think youth development के लिए useful होगा. 52 million for Buffon back in 2001. That's the world record fees at the time. उस टाइम पे पैसा की वैल्यू एक थी, और अब हर एक प्लेयर भाई, एक कोई भी चला जाता 50 मिलियन के लिए, 20 मिलियन के लिए. भाई, वी लिव इन क्रेजी टाइम्स हो गए, मतलब पागलपन है ना, मतलब इट्स क्रेजी हाउ टाइम्स हैव चेंज्ड इन फुटबॉल यार. किम मिन जाए ले लो, परम भाई इज डेफिनेटली गेटिंग सोल्ड. देख, मुझे किम पसंद है, बट he's not really lived up to his level, and I don't think we should sign a player like him, especially given our coaching situation right now. So yeah, रुको एक दो लास्ट कमेंट्स लेके, आई वांट टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स योगेश, देन वी क्लोज दिस स्ट्रीम. मॉडरेट ये भी ले लिया मैंने. सेट पीसेस आर बिगेस्ट इन द हाइट एंड फिजिकल, आई एग्री विद यू अश्विन ऑन दिस. ये भी ले लिया मैंने, ये भी ले लिया. ये लेते is Leao leaving what is most likely destination? Bayern, Barca, Chelsea, Arsenal or somewhere. Also Theo, ये F AC Milan. So अभी जो लिया, मेरे को ना योगेश, मैं तेरे से भी पूछता हूँ, मेरे को लग नहीं रहा ले हो जाएगा. Yes, they are considering offers and whatnot, but उसका एक तो release clause वो 175 million, then they're trying to lower and negotiate a lower fee, Yogesh, but even that is high, right? 75 हम्म। million, 80 million, and Leao he's not living up to that what's expected of him. वो Yeah, स्कूडेटो yeah. सीजन में उसने कैरी किया एसी मिलान को, बट आफ्टर दैट व्हाट मतलब, यस इज Expecting I was expecting कि ये पोर्चुगल जो पोर्चुगल वन दी नेशंस लीग राइट, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लियाओ अगर कुछ उसमें does some major contributions, then his transfer market value would have been climbed up again, but पोर्चुगल नेशनल टीम में भी लाइक उसका कुछ खास कंट्रीब्यूशन रहा है नहीं. आई गेस लियाओ का मार्केट वैल्यू इज नॉट गेटिंग बूस्ट फ्रॉम एनीवेयर, so it's going to be very troublesome situation here, like both for the player, club and the fans here. It's a very difficult situation. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. एंड यार, इट्स अ वियर्ड वन, बिकॉज अगर तुम्हें डेडवुड, ये जो भी, डेडवुड नहीं बोलूंगा ले आपको, बिकॉज आई स्टिल फील ही हैज टन्स ऑफ पोटेंशियल, इज दैट ही जस्ट डज Yeah, नॉट लिव अप टू इट. yeah, ही इज अ प्रॉब्लम, थियो इज अ प्रॉब्लम, जैसे मैंने अभिषेक ने बोला, बट कैन दे टर्न इट अराउंड अंडर अलेग्री इफ दे स्टे, बिकॉज ये बड़ा समर है मिलान के लिए, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. If you're yeah. weeding out the toxic elements, you have to weed out everyone. Then मैं वही rebuild की बात कर रहा था, और they are facing obstacles. लियाओ को कैसे बेचोगे आप उसको, I don't think he wants to go to Saudi Arabia. So even if Saudi club comes calling, we'll have to see. But this is a very good question. मेरे को personally लग नहीं रहा जाएगा. तेरा क्या prediction होगा? Just yes or no. Do you think Leao leaves AC Milan this summer? Yes, yes, I think so. Interesting. Because I think he will somehow end up staying. But yeah, if you have chance to send Barca player, which will be? इसको थोड़ा thought देना पड़ेगा यूएन क्राइफ. नहीं, सिर्फ मेरे पास तो आंसर है यार। बोल. लमीन यमाल। यहाँ एक्चुअली मैं तो नीड्स के हिसाब से जा रहा था, बट yeah, I would probably say Kubarsi, but yeah, Lamine Yamal is a great answer. Obviously, very simple answer. Peter Sucic कहाँ खेलेगा? Is he a Barella backup or straight away Mickey replacement? Also Fratesi staying. So let me answer this because Inter का market भी थोड़ा touchy पे कर लूँ. Inter has signed two players, Peter Sucic and Luis Enrique. Not Luis Enrique, who was the coach of PSG, who trashed us, but Luis Enrique from Marseille. Peter Sucic is more of a number 8, number 6 का hybrid, Yogesh. He's a box to box player, but also can play as a 6.
he is he's already broken. तुझे पता है योगेश ब्रोजोविच had set a Guinness World Record of covering the most distance in a match in the FIFA World Cup. Brozovic अच्छा. that was that kind of a player always. जो बोलते थे tank. Peter Mm-hmm. Suchich has already broken that world record. He's already broken Brozovic's record at this age. It's not Yeah. about just that. He's a goal scoring midfielder. He has great tenacity. People in Croatia rave about this kid. ये इतना popular है not just because of his name or anything. He's not. It's not like he's a Mm-hmm. popular thing. और वो पिच पे हमेशा रिजल्ट्स डिलीवर करता है. He played recently for Croatia अभी जो international break में था. He stood Mm-hmm. out in all games. And I'm not saying because just because he signed for Inter. He's a very good talent. Like Croatia में लोग खुश है. मैं सोशल मीडिया पे कमेंट्स they're like भाई the only disappointment is Simone Inzaghi is not the coach right now. That's the only issue. The hope is कि वो के साथ वो adapt हो पाए. That's the only thing. But purely from his perspective, Peter Such's perspective, we have signed a very good talent, one of the top talents in the world. It's just a question of एक जो कोच चेंज हुआ है, जो थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हुआ, उसमें वो सेटल हो पाए. नथिंग एल्स. अदरवाइज फ्रॉम दैट प्लेयर्स एंड क्वालिटी वाइज इट्स नॉट एन इशू. ही इज मोर ऑफ अ नंबर 8 बट कैन प्ले अ 6. मुझे लग रहा है शायद 6 यूज हो थोड़ा स्टार्टिंग में बिकॉज असलानी शायद जाएगा. Mickey ko Mm-hmm. he can definitely bench given that Mkhitaryan is not getting any younger. As much as I love Mkhitaryan, but he can play multiple roles in that midfield. Abhi 6 or an 8. Fratesi staying is a possibility, as I said before, because Kiwi likes him. Thoda they are considering it. They'll consider it, but there are clubs interested in Fratesi. I know Napoli is still interested of sorts. They're not like going full ekdam se, but they're interested. Juventus के भी links है, but again whether Inter sells to a direct travel remains to be seen. But let's see where it goes. That was to answer your question. मैं एक दो comment लेके we'll just discuss a few things and close this. Yogesh, according to you guys, which are young player to watch out? इस पे हम लोग वीडियो बनाने वाले चुप चुप के लूंगा. हमारा एक वीडियो ड्यू है इस पे. We will be making a video very soon on this, so I'll address this then. Um, Youth academy is a big problem, Sharan. Yes, it is a big problem in Napoli. जैसे योगेश ने बोला, इंसीनियर भी. Yeah, it's been ages. It's been ages in Naples. It's been ages, Yogesh. It's bad in that sense. ठीक है, that's his prediction. Felix का 14 जर्सी भी ले लिया चेल्सी ने. परम changed alliances. ये comments रुकने नहीं वाले. Are we signing any striker? We let go of Korea or Arnautovic. So finally, Korea और Arnautovic गए मेरे क्लब से, तो मेरे को तुम लोग को पार्टी देनी पड़ेगी सबको. And Taremi is being sold. Are we going to replace them with Espo brothers or Carbon? It's a good question because Yogesh news आ रही है, जैसे मैंने बोला. So Arun to answer, and Gion Boni of Parma is mostly coming. Is mostly signing for Inter. He's in the Inter in sort of advanced negotiations. उसके बाद once he's signed, the prediction is Inter will not sign any more strikers. So Inter strikers will be Lautaro, Thuram, Boni. Taremi is 50-50. He could stay as well, he could leave. And Pio Esposito could also stay. So Inter could have 5 strikers, but it's a very weird situation, Yogesh, because Pio Esposito के बारे में अगर तूने कुछ पढ़ा होगा, he absolutely killed it in the Serie A. He scored like 20 goals. Mm-hmm. And you can't have a 19-year-old as a 5th choice striker, if you understand. Then you have to play the 19-year-old more. Now the only positive of मैं जो बोला था उस दिन Kivu coming in as coach कि वो youth players को खिलाता ज्यादा है, जो सिमोने इंजागी नहीं करता था. Kivu has coached Yogesh Inter's youth academy like almost fully. Inter under 14, Mm-hmm. 16, 17, 18, 19 सब कुछ कर लिया उसने. So youth players को उसको खिलाने के chances ज्यादा है. So there is a possibility that उल्टा भी हो कि Taremi अगर रह गया तो he becomes like the 5th choice, like an Arnautovic Korea. Your Mm-hmm. Boni, your Esposito stays. So it's a very weird situation. I don't know. There is the prediction basically is that if Inter sign Boni and if no other striker leaves, then that's Inter striker market completely closed. And it's a bit underwhelming. Lautaro Thuram top, Boni raw player, and then an out of form Taremi. That is very dicey, but But let's do you see. think Inter will continue with 3-5-2? Like Yeah, formation change का good rumors question. like वो नहीं है. गुड क्वेश्चन. सो कीवू यूथ लेवल में इंटर के ना 4-3-3 खेलता था ज्यादा. पार्मा में भी 4-3-3 खेला, बट ही स्विच टू ही नोज हाउ टू प्ले अ 3-5-2. द क्वेश्चन इज कैन ही वो प्रिंसिपल्स रिटेन करके कैन ही मेंटेन दैट स्टेबिलिटी. योगेश, आई थिंक दैट्स द रियल क्वेश्चन, राइट? Mm-hmm. 3-5-2 खिलाने के लिए ही डिड दैट एट पार्मा आल्सो. तुझे याद है वो गेम वेयर यू गाइस ड्रॉप पॉइंट्स अगेंस्ट Yeah, पार्मा एंड वी ओवरटुक यू ऑब्वियसली. yeah, पर yeah. सॉरी वी फेल टू ओवरटेक यू एट दैट पॉइंट. हम आल्सो Mm-hmm. फेल कर दिया हम लोग ने. कीवू ने काम किया था तुम लोग के अगेंस्ट. ऑब्वियसली यू सॉ दैट पार्मा दे कैन डू इट. ही कैन कोच दैट. द प्रॉब्लम इज
Kivu is just too young, right? He's only coached 13 games, won 3 at senior level for Parma. So can he coach those egos? Can he keep those principles going? Can he convince that bhai, Lautaro Martinez is a big figure. He's the captain. He knows. Can he command leadership out of Lautaro Martinez? कि भाई हाँ मैं वो कीवू हूँ जो ट्रेबल जीता था. You have to respect the same guy. I'm the same guy who won the treble who was an inter legend. Can he replicate that as a coach? If he does that for me, Yogesh, to answer your question, yes, we'll be fine tactically. But if we cannot command that respect of the pitch, I feel it's Yeah. an issue. So let's get talk. We've streamed for almost 1 hour 35 minutes, guys. एक तो I want to say thank you to everyone for joining. Please do like, share and subscribe. Please follow Yogesh on social media wherever. थोड़े और चीजें डिस्कस करके योगेश वी आर क्लोजिंग दिस विद द लास्ट कमेंट्स. अब मुझे तो एक बता, there is some other news going on of, let's discuss Edin Dzeko. Edin Dzeko is close to a return to Serie A. मतलब ये दो बंदा तो दो एडिन जेको भी है, चीरो इमोबिले भी. चीरो इमोबिले के भी लिंक्स है, yes, but let's touch upon Edin Dzeko because Edin Dzeko भाई मतलब he's a legend of the game, whatnot. Yeah, The two yeah. clubs that want him are rivals, Fiorentina and Bologna. अब Bologna का इंटरेस्ट पहले आया था and I do feel they need like an experienced striker because they don't have one. But now apparently because Pioli is joining Fiorentina, Fiorentina is in the lead for Dzeko. क्या लगता है तुझे about this? Like he's obviously very old, but I feel now वो बहुत useful है still. Do you think either of these clubs it makes sense for them to go for him, and which club do you think suits him better, Bologna or Fiorentina? यार मैं थोड़ा एडिन जेको का थोड़ा वो बैक स्टोरी देना चाहता हूँ. बोलना लाइक बोलना. व्हेन नापोली वर ट्राइंग टू गेट हिगुआइन को जो समर में लेके आए थे रियल मैड्रिड से, वो टाइम पे आवर फर्स्ट टारगेट वाज एडिन जेको, एंड ही डिड Yes. नॉट कम टू नापोली, ही वेंट टू रोमा एट दैट टाइम, एंड देन Yeah. नापोली वेंट इन एंड वेंट फॉर गोंजालो हिगुआइन. तो Hmm. एडिन जेको का वो टैलेंट एंड द इयर्स दैट ही स्पेंड एट मैन सिटी, तो Hmm. exceptional players था यार. Like even in Serie A, like he had multiple season where he scored more than 20 goals, but Hmm. at this time, like getting 10 goals out of him, I don't think so that's going to be very easy. but Hmm. but I think they are getting him more for off field reasons, like उसकी जो एक लीडरशिप क्वालिटी है, लाइक राइट, तो उसके लिए उससे ज्यादा ला रहे. आई डोंट थिंक सो बोथ ऑफ दीज क्लब्स वुड एक्सपेक्ट लॉट मेनी गोल्स आउट ऑफ एडिन जेको Yeah. एट दिस पॉइंट. Hmm. मेरे लिए ना मैं, so with that being said, who do you think should which club do you think is a better fit for him? और ये मेरे को comments पे बोलो आप लोग जो देखे हो फियोरेंटीना और बोलोनिया को लास्ट सीजन उसके बेसिस पे in the comments. And Yogesh, who do you think, which club do you think is a better fit for Edin Dzeko if he goes Uh, there? yeah, yeah. I'm not very sure. Like both clubs के ups and downs are like Fiorentina are out of European football, right? Yeah, and yes, no, sorry, they get playoffs of conference league, playoffs से start करना पड़ेगा. अच्छा अच्छा. Yeah. Yeah, both clubs are have European commitments here, though I'm not sure. I guess Hmm. he'll add some depth. He'll add some quality in the training fields and whatnot. Yeah, like he'll be an immense figure in the locker room as well. Hmm. But on field during games, I'm not sure what his contribution could be. सी एक चीज मैं बोलूंगा जेको का स्टिल लुक टर्किश सुपर लीग इज नॉट द सेम एनी मोर, इट्स क्वालिटी हैज डिप. आई स्टिल फील इट डिसेंट. यस उसकी उसका फिजिकल डिप दिख रहा था जब वो इंटर में भी था ना योगेश. मुझे वो दिख रहा था कि फिजिकल योग आई लव्ड व्हाट जेको डिड बाय द वे, मतलब बहुत उसने अच्छा किया. बट वो डिप दिख रहा था मुझे. सो यस इन दैट सेंस आई एग्री विथ यू कि ही शुड नॉट बी द फोकल पॉइंट ऑफ एनी क्लब. समझा मतलब either of Yeah, these clubs should not be over dependent on him because he is old after all. One thing I will say, किसी ने comments में बोला है, I think it is सोया मूसेस, बोलोनिया नीड्स अ प्रेजेंस इन द ड्रेसिंग रूम. ये मैं अग्री करता हूँ बिकॉज बोलोनिया के को एक्सपीरियंस की उस सेंस से जरूरत है. बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ लोरेंसो डी सिल्वेस्ट्री जो 39 इयर्स ओल्ड राइट बैक है, खेला लास्ट सीजन. ऑन द फ्लिप साइड अगर आप कोई भी स्ट्रीम देखोगे मेरा ना योगेश, मैं बार बार बोल चुका, फियोरेंटीना नेवर हैड अ गुड बैकअप फॉर माइजकी. Or never, not forget good, they just did have a backup for Moisakin last season. yeah, yeah. Goodmanson was not a backup for Moisakin. और गुडमनसन की भी तो साइनिंग देखेगा योगेश, जो हाइप था डिड नॉट लिव अप टू इट एट ऑल. Mm-hmm. एब्सोल्युटली उल्टा गया. सो फॉरगेट गुडमनसन फॉर अ व्हाइल, बट यू कैन मेक एन आर्गुमेंट फॉर आइदर क्लब. फियोरेंटीना देख के बोलेगा भाई वी डू नॉट हैव अ बैकअप फॉर मोइजकिन, वी नीड अ बैकअप. जेको एट दिस एज विल बी अ गुड बैकअप because
ठीक है, वी माइट प्ले यूरोपियन फुटबॉल, बट इवन हम्म, देन एटलीस्ट उसका रिड्यूस्ड रोल होगा। बोलोनिया बोलेगा अरे हमारे पास भी स्ट्राइकर्स है, देखोगे तो डालिंगा है, कास्त्रो है, जेको कम्स इन लाइक दिस थर्ड चॉइस ऑफ सॉर्ट्स, जो वेटरन, अगेन दैट यूजफुल वेटरन व्हिच बोलोनिया नीड। सो ऑनेस्टली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पिक, बट अगर तू मुझे पूछेगा ना, I feel even being a second choice striker at this point for Fiorentina is a bit too much. Like, समझ रहा है तू? yeah, क्योंकि yeah, this is yeah. like a direct replacement for Keane. He will get Hmm. more time at Fiorentina, but I feel he should go to Bologna if they really want him. If they keep Dalinga, if they keep Castro, उसको थोड़ा रिजर्व्ड रोल में रखो, कम गेम्स खिलाओ, और कोई इंजर हुआ तो ही इज ऑलवेज देयर टू स्टेप अप, राइट? आई फील बोलोनिया मेक्स मोर सेंस पर्सनली, दैट जस्ट माय ओपिनियन, अब मुझे लग रहा है। तेरा क्या था, सॉरी, तेरी पिक क्या थी, लाइक जस्ट वन पिक? No picks, yeah. I don't have any picks. Yeah, Bologna on average have a young. See, this is where I'm standing. Many people are saying Bologna 100%, Bologna 100%. I agree with that. Just one, a couple of few news more, and we can move on and just take last comments and close this. But Yogesh, apart from this, we also have ये अभिजय ने बोला है, where is that comment? पियोली वाला अभिजय का, अगर तुझे दिख रहा है योगेश तो मुझे जस्ट वो पुल अप कर ले, मेरे को मिल नहीं रहा है। Param bhai, thoughts on Kivu नहीं नहीं assembling नहीं, the. वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, हम उसने पियोली के बारे में बोला था कुछ तो फ्योरेंटीना का, विच आई कैन नॉट फाइंड अभी अभिषेक का जैसे। ये कमेंट भी ले लेते हैं, हाँ Bucharest to ये, UAE, any truth in this? देर आर लिंक्स बट There are वी हैव टू links. सी। उसके लिए पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस विद लाहोविच। जब तक Yeah. लाहोविच नहीं निकल रहा कॉन्क्रीट, And this guy is not coming for cheap, yeah. Like 70-80 million euros starting bid होने वाला है. And Gyökeres is not cheap. half the Europe is behind him. So या I'm not really ही, sure. एंड स्पोर्टिंग के प्रेसिडेंट ने बहुत डिफिकल्ट कर दिया, वो लोग का प्रेसिडेंट इज लाइक मैं आसानी से जाने नहीं दूंगा। एंड इफ यू नो योगेश, नेगोशिएटिंग विद पोर्चुगीज क्लब्स इज लाइक भाई, आप पहले ही ट्राई में ना हाथ जोड़ के चल, इटालियन क्लब्स की बस की बात नहीं है, मैं ऑनेस्टली बोलूं तो। Yeah, इफ yeah, यूए yeah. पुल दिस ऑफ, हैट्स ऑफ टू यूए, इफ दे पुल दिस ऑफ, but there is interest, of course there is interest. UA were also interested in Osimhen, I'll be very, like Juntoli, because अभी Juntoli गया तो cool off हो गया because Juntoli wanted Yes, yes. Osimhen. Yeah. uh, ये मैं लेता हूँ, ये एंड में कृषाणु, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आई टेक दिस एट द एंड। मैं स्टार कर रहा हूँ, थोड़ी देर में बंद ही होगा। सो जस्ट स्टिक अराउंड। ठीक है, अभी से योर फ्योरेंटीना कमेंट, आई सॉ इट समवेयर, आई कांट फाइंड इट, बट टू आंसर इट, he asked Yogesh purely, I think he asked कि why is purely not go considering any other job, why is he considering Fiorentina? एक चीज मैं बोलूंगा, purely as a player was, his career was the longest at Fiorentina. As a player, he played over 150 games there. He has a connection. He's even coached Yogesh Fiorentina in the past. 2017 से 19 अगर तुझे याद होगा, he was a coach there. And again, he overall did a very decent job. Like he's been that Fiorentina figure, and I feel this is sort of like his homecoming basically. कि हाँ मैंने स्कूडेटो जीत लिया फाइनली, मैंने सऊदी जाके पैसा बनाया, जो भी है उधर भी ठीक काम किया। एंड आई पर्सनली, योगेश, आई गेट योर ओपिनियन इन अ मिनट, बट आई फील दिस इज एन ऑल राइट सेंसिबल मूवमेंट, मतलब है कि यू नो ही इज काइंड ऑफ going to the right level right now. He's not over ambitious. He just knows कि हाँ मेरे को फ्योरेंटीना को गाइड करना है कहीं तो, because फ्योरेंटीना, योगेश, how many times have we said this, कमीजों से बात करता है, मेरे को फ्योरेंटीना को ऊपर लाना है, यूएसए में Uh, जाके बड़ी बड़ी बातें करेगा, yeah, या yeah. फ्योरेंटीना बार बैक, फ्योरेंटीना विल बी अ टॉप क्लब। कब से हम लोग, योगेश, कितने प्रिडिक्शंस में हमने बोला होगा फ्योरेंटीना शुड बी फाइटिंग फॉर टॉप 5 टॉप 4, जो भी है ऐसा लगता है, बट दे ऑलवेज डिसअपॉइंट। एंड आई फील Pioli is that one guy, he might, I'm not saying he's great or anything, but उसकी जो मैन मैनेजमेंट है ना, दैट, जब वो लोग स्कूडेटो जीते थे, योगेश याद है, एसी Yeah. मिलान, इंटर वर इन द ड्राइविंग सीट, बट Hmm. why did AC Milan win it? Because they were persistent, they had a sense of conviction. वो जो निकालता है ना पियोली, when he's on song, he does a very good job. I don't like Yeah. admitting this, and I feel this makes a lot of sense. What do you think? Uh, I guess it's a very good signing by Fiorentina, यार. So getting Pioli back, and जैसा आप बोले कि it's sort of an homecoming for him. Pioli, Serie A का experience रहा, he has won it as well. Yeah. So he brings in a lot of experience, and I think Saudi Arabia जाके he has satisfied his need for money for him and his
पता नहीं कितने पुश्ते के बहुत लिए। पैसा कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया भाई, अमीर हो गया वो अभी, अमीर हो गया है। उस स्पलेटी का फ्लोरेंस में जो स्पलेटी का फार्म है वो भी खरीद ले शायद, और क्या। या तो आई गेस इट्स अ वेरी गुड साइनिंग यार। एंड फ्योरेंटीना 2 बार यूरोपियन फाइनल्स जाके आई है, या 2 बार, राइट? तो या हार भी गई ऑब्वियसली, बढ़िया। So I वो guess तो I guess they need to turn a page. Fiorentina needs to turn a page. They are at an inflection point. Last season was a quite positive for them. I'm not going to say that अच्छा season नहीं रहा. It was a very positive season for Fiorentina, but they always felt that with the squad strength that they had, like Moise King का जो form था, a lot more was expected from them, right? So हम्म I guess Pioli would provide some additional tactical nows जो Fiorentina की young squad are missing. They I guess that that should be fixed by Pioli. अग्रीड अग्रीड ऑल्सो। अभी जे देख, ही इज नॉट दैट ओल्डर एनिंग, बट यू हैव टू कंसिडर अल नासर के बाद एक तो ही डज नॉट हैव मेनी ऑफर्स इन हैंड, ठीक है, एक तो वो Yeah, रियलिटी भी फेस करते हैं। इटली का ऑफर था, यू कैन से ही शुड हैव टेकन दैट अप, बट इटली इज अ मेस, हमने डिस्कस किया। तुम इटली इटली का जॉब लेने से अच्छा यू बिकम अ स्केपगोट, देयर यू गेट ब्लेम्ड एंड योर रेपुटेशन टेक्स अ कंप्लीट, यू नो, इट गोज डाउन द गटर। वो फ्योरेंटीना को अगर तुम फ्लिप साइड देखो, फ्योरेंटीना ऑलरेडी ऐसा क्लब है जिससे हम लोग थोड़े एक्सपेक्टेशंस अभी कम रखते हैं, राइट योगेश, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी yeah, डिसअपॉइंट करते हैं। तो इवन इफ इट yeah, डज अ बैड जॉब देयर, इट्स नॉट लाइक यू लुक एट इमेज वाइज से क्या, अरे हाँ फ्योरेंटीना में है, क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट इफ इट डज अ गुड जॉब देयर, इज लाइक भाई इसने फ्योरेंटीना के साथ अच्छा काम किया, जैसे पलाडिनो कर रहा था। yeah. पलाडिनो, यू लेट And मी टच अपॉन दैट। mhm. Palladino had extended his contract not that long ago, like literally weeks ago, until 2027, and then he left 1 week or 2 weeks after that. So it tells you Fiorentina is a chaotic club. Now, if Pioli does well, it's a game changer there. Yeah. So you have to Yeah, Pioli का अगर अच्छा सीजन निकलता है फ्योरेंटीना के साथ में, then he'll be again in conversations for top club management यार। तो एग्जैक्टली टॉप जो भी, ही डेफिनेटली गेट बेटर ऑफर्स यार, जो मतलब yeah, बाद में उसके बाद वो अजूरी कंसिडर करे, क्योंकि अजूरी में मतलब गटूसो के बाद फिर से अगर ओपनिंग आ गई तो अब श्योर वो दे विल बी लाइक, अरे हाँ चलो पियोली को अपन कंसिडरेशन में तो रख तो सकते हैं। आई एम श्योर दे लुक एट अदर कोचेस, लाइक एट दैट पॉइंट इवन दे कंसिडर सिमोने सिमोने इंजागी इन द फ्यूचर। आई एम प्रीटी श्योर वो तो एक कुछ ना कुछ उधर होगा, yeah. बिकॉज दैट इज वन ऑफ योर बेटर कोचेस। बट एंड बिसाइड्स द पॉइंट, let me just take a few comments and we'll close this. If there is any important news, I'll pull it up and we can close this. मैं कहाँ रुका था, बाप रे। क्लब वर्ल्ड कप का डिस्कशन थोड़ा कर सकते हाँ हैं, कर सकते कमेंट्स हैं, में भी आ रहा है काफी। हाँ करते हैं ना। एक मिनट, एक तो हाँ, since the stream is at the end, what are your expectations of Inter and UA? Let me start with Inter. Honestly, मैं एक्सपेक्ट मैं अब पहले दे देता हूँ। बोल ना, जा तू बोल I'm पहले, चलेगा। expecting I'm expecting Inter to go full blown out here. They have to clear out their image जो फाइनल में ब्लिप रहा है इंटर का। They have to हाँ। clear that out, and I hope for Italian football sake, for Serie A का image के sake, for that, from that perspective, as a Serie A fan, as an Italian football fan, कि Inter clears up their image here. Like they go down, maybe win the whole thing, or they just players go all out and put a very strong image here कि that was a final में जो एक मैच हुआ, that was a one off blip, and that's not what real Inter was. So I'm expecting that out of Inter. And Juventus, no comments here. Juventus is all over the place. I don't expect much from Juventus. The group be difficult, so I'm not expecting much from Juventus in this. देख देख, तेरे तेरे थॉट्स अच्छे फेयर है, लाइक फ्रॉम इंटर सेंस व्हेन आई वांट टू जस्ट रिपीट योर थॉट्स, मैं बोलूंगा image wise, yes, it is important to clean up that image, because I agree कि what we saw in the final, as great as PSG were, जैसे मैंने उस PSG fan को reply किया, as great as PSG were, Inter did not show up as well. There is truth to it कि Inter नहीं show up, जो जो level है नहीं किया, वो गंदा था एकदम। मतलब मेरे को देख के लगा कि भाई this is embarrassing, and I felt that embarrassment as a fan. PSG obviously, again to repeat myself, yes they deserved it. तो यस, क्लब वर्ल्ड कप लोग बोलते हैं, हाँ ये क्या टूर्नामेंट आ गया बीच में सडनली एक्स्ट्रा फुटबॉल, एंड इट इज फेयर बिकॉज प्लेयर्स आल्सो नीड अ रेस्ट, राइट योगेश। ये प्लेयर्स Yeah, रेस्ट कब करेंगे, आप कितना खिलाओगे। बट जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, इधर पैसा भी है, यू कैन पोटेंशियली गेट मोर मनी फ्रॉम द क्लब वर्ल्ड कप देन यू डिड इन द चैंपियंस लीग। अगर आप वो पर्सपेक्टिव डालो, इटालियन क्लब के लिए वो इंपॉर्टेंट है। आप क्लब वर्ल्ड कप हर 4 साल ही होने वाला है। वैसे भी अगर आप जीतो
एक अच्छा चलो एक ट्रॉफी कुछ तो आ जाता है आपके हाथ में, थोड़ा ब्लिप एक क्लियर हो जाता है. इट्स नॉट लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी यस, बट एक काइंड ऑफ ट्रॉफी का वैल्यू आ जाता है कि यस यू वन समथिंग एंड यस क्लब वर्ल्ड कप. Yes, this is a new format, Yogesh, but Club World Cup as a tournament has always been there around, right? It's been in a Yeah. shorter format. Yes, you can argue it should only be played amongst winners. All these extra teams are not needed. I agree, fair enough. But I do think, yes, you have to try to do something. You can't just crash out. Mera point, but realistically thinking, can Inter do well? I don't know. मैं तेरे को बोलता हूँ क्यों. Right now we have थोड़ा injuries as well, okay? ठीक है एक. Lot of players coming back late from national team duty जो थोड़ा just start करेंगे. और तू जो इटली का देखा, right? You Yeah, saw yeah. the Inter Marco and player. Bastoni, Italian national team पे जब खेले थे, they were sort of looking shell shocked यार, like they They were looked shell shocked and did they were not. tired. They Yeah, were yeah. tired. And also मैं तेरे को बोलता हूँ तूने जो shell shock word निकाला ना, let me bring that up. मैं उस दिन अपने rant वीडियो में भी बोला. ये जो फाइनल डिफीट था ना उससे रिकवर होना देख यूजुअली इंटर ये ओवर द इयर्स ना दीस रीसेंट इयर्स वे बाउंस बैक फ्रॉम हेवी थिंग्स वेरी वेल ओके द Yeah. चैंपियंस लीग लॉस अगेंस्ट मैन सिटी एंड ऑल व्हाट नॉट बट दिस 5-0 डिफीट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट उस दिन डमफ्रीज ना एस्टोनिया के अगेंस्ट एस्टोनिया बोल रहा हूँ फिनलैंड के अगेंस्ट जब जीते ये लोग ठीक है he scored a goal. He had a post-game interview, and they asked him how he's been handling the Champions League loss, and he said honestly, not that great. He's been very honest. Honestly, Dumfries has been the most positive revelation Mm-hmm. this season, and after the वो सबसे mature handle किया. Honestly बोल रहा है कि it's not been easy. I still think about it. It's taking time to get over. और ये कीवू का एक और चैलेंज होगा योगेश. How do I Yeah, get them out of this? ये 5-0 because that was a thrashing. That's not easy to get over. yeah, yeah. So that's a challenge. The players staggered manner में यूएसए पहुंच रहे. तरेमी ईरान में अटका है जैसे मैंने बोला. Don't know if Mm. he's going to be there. Arun का जो question Darmian, he's there in the squad by the way. Arun, he's there in the Club World Cup squad. So ना थोड़ा all over the place है. थोड़ा injuries है, थोड़े young players है. तो इंटर के लिए with all due respect to the tournament, it is a phase. It is a tournament where we need to test and get our identity right tactically and off it so that we are ready for the main season. I'm not saying ये प्री सीजन है हमारा, मैं वो नहीं बोलना चाह रहा, तो समझ रहा मैं कौन से पर्सपेक्टिव से आ रहा हूँ. Mm-hmm. मैं बोलना चाह रहा हूँ yes we have to do well, I agree with what you said, but we also have to use it as a platform to find ourselves again, because after Simone Inzaghi is gone there is going to be a change in terms of how we react to things, how we tactically operate, whatever. This is that tournament where Kivu has to showcase himself कि हाँ भाई I am the coach now, Simone Inzaghi गया, you respect me, tactically भी अब मैं करूंगा लीड, जो भी है you guys have to buy in. That's the phase for me, and that's why I don't think we'll go एकदम ज्यादा आगे तक इस टूर्नामेंट में, बट एक ठीक लेवल का परफॉर्मेंस करके we'll get knocked out at some point is my opinion. ठीक अमाउंट का पैसा कमा के we'll get knocked out. Juventus, you said you don't have much hopes, which is also a fair point because Juventus अभी finally टूडोर को कंफर्म किया है. उनके अभी Yeah, साइनिंग्स क्या होगा वो तो अभी क्लब वर्ल्ड कप तक तो कुछ होने नहीं वाला, रजिस्टर नहीं कर पाएंगे वो yeah, लोग, yeah, yeah. राइट. So we don't know what version of UAV. Look, I think the positive Yogesh here is Igor Tudor being confirmed because they again that guy's familiar with Juventus, right? And they Yes, yes. needed that. Imagine now having a new coach with no new signings per se and going into the Club World Cup. I feel Juventus will have a stable Club World Cup. In my opinion, I feel Tudor staying was the biggest plus. He will again for Juventus also to same चीज बोल सकता है. They'll try to use the Club World Cup to find themselves. These two clubs that are competing from Italy, they really need to find themselves right now. तो Right. Juventus का भी जो बोला all over the place, it's Yeah, yeah. right. Like behind the scenes, like Juventus ने भी कितने major investment किए थे ये season में. It did not work out for them. Yildiz was like कितना badly उसको use किया था Yeah, all yeah, around the pitch by yeah. right, and Guntoli got sacked. Board में भी इतने सारे changes किए Juventus ने. तो that was my point कि Juventus had a lot of things going on, and Tudor को भी like Tudor was also like shown the door at one point, and then he was confirmed later. That's a तो fair point. That's a fair point. That's a very valid point. तो That's a very वैसा valid point. इंदौर के साथ में भी वैसा किया था तो राइट तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड मैन सिटी है हाँ, उनके ग्रुप में तो इट्स दे yeah, that's दे not easy. डिफीटेड मैन सिटी बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन राइट नाउ तो I mean, डिफिकल्ट ग्रुप है उनका that's a very good point कि हाँ टूडोर को भी अभी उस चीज को शेक ऑफ करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे को निकालने वाले थे ये लोग और अब वापस रखा है. So these are not easy dynamics to deal with. Both या these या clubs
both these clubs have a lot to deal with in the Club World Cup. We have UA Corner Cast. Thank you guys for commenting and joining. But yeah, जैसे जैसे क्रिस्टियानो लाइक यू हैव टू प्रॉब्लम इज यू जैसे क्रिस्टियानो बोल रहा है 150 125 मिलियन सॉरी फॉर विनिंग इट 70 मिलियन ये पैसा बहुत है दोनों क्लब्स के लिए इंपॉर्टेंट है स्पेशली अगर तू Mm-hmm. फाइनेंशियल कंपैरिजन करेगा यूए इंटर की तो बोल सकता है यूवेंटस के लिए इट इज अ बिट मोर इंपॉर्टेंट एज वेल important for both. But yeah, then Juventus have signed Comoli in their management, who has not had a great reputation. So there's a lot of question marks for both these clubs. You can say again more for Juventus because what the hell are Juve planning to do? Swarnim Bhai is trying to bait you into saying I've almost said it by mistake. See, I so the point is तू जो बोला मैं तेरे से अग्री करता हूँ there's too many question marks and both these clubs can really by doing well can gain that confidence also going into the season कि हाँ Yeah, हमने और ये देख योगेश मैं ग्रुप्स बोलता हूँ राइट इंटर हैज अ ग्रुप ऑब्वियसली ऑफ मॉन्टेरे मैक्सिकन क्लब रिवर प्लेट जो ऑब्वियसली एक शिवम इन आवर legendary चैट इज अ club. रिवर प्लेट फैन and we have Urawa Red Diamonds. So these are you're playing decent clubs. You're playing clubs of a decent caliber. So like weak teams आप खेल रहे हो आप just ठीक है आप different continents आप एक decent because these clubs will be fielding some good teams. They're not going to play their youth teams as well. Okay, Mm-hmm. Juventus के लिए देखो they have the former not that long ago champions of Asia Al Ain है मैनचेस्टर सिटी है सो देन देयर इज अ टेस्ट ओवर देयर मैनचेस्टर सिटी नए प्लेयर साइन कर रहा है तो देख रहा है लेफ्ट राइट सेंटर and Yeah, Wydad Casablanca from Morocco ठीक है so the point is there is a certain level of competition that is expected जो दोनों दोनों टीम्स को फेस करके करना है अच्छा so yeah I feel they have to if they do well then there is a good chance of them doing well in the season only negative is इन प्लेयर्स को कोई रेस्ट नहीं मिल रहा है बेसिकली देयर इज जीरो रेस्ट yeah. हाँ वो तो है, वो तो है. हाँ especially Inter could have done with this rest because given the older players we have, it's going to be a challenge. And see, again, both these teams are still are yet to make signings. इंटर ने दो साइनिंग क्लब कर वर्ल्ड कप के लिए कर दिए रजिस्टर हो गए दैट्स इट यूवेंटस का तो वो भी नहीं है सो वील सी द जस्ट लेट मी पुल अप द विजुअल की क्या शेड्यूल है कब चालू हो रहा है एंड देन वील टेक अ विल अच्छा, ये क्रॉस प्रिडिक्शन सब पूछना चाहूंगा परमेश, परम, लाइक हु डू यू थिंक इज विनिंग द क्लब वर्ल्ड कप? दिस इज अ गुड बोर्ड दिस एकदम से तू उस पे चढ़ गया यार ये तो बहुत मतलब मुश्किल है यार पहले एक मिनट रुक पहले मैं जरा शांति से देख क्लब वर्ल्ड कप ना देख अभी तो नेचुरली पीएसजी चैंपियंस लीग जीता तो obviously PSG first comes to your mind या या but I want मैं to मेरा say दे देता हूँ. आई गेस PSG and Man City are definitely in the conversation. Yeah. I think हाँ yeah I think I will go PSG has to be one team but I will put Real Madrid there because Real Madrid also I feel have a point to prove now कि जो सीजन हुआ Real Madrid के साथ right Yeah, योगेश yeah. वो जब ट्रॉफीलेस सीजन जाता है इनका दे देन बाउंस बैक दे ट्राई देयर बेस्ट और एंड यू it सॉ द थोड़ा सा इट्स वेरी सून यार, लाइक कोच को सेटल इन होने का कुछ खास यस टाइम आई नहीं एग्री है. आई एग्री आई एग्री बट देन वही चीज है ना कि कोच लिया तो भी है भी मस्त कोच लिया है ना वो भी आई एग्री इट्स नॉट फीफा एंड ऑल दैट मैं तेरे से फुल्ली एग्री करता हूँ बट मैं आई जाऊंगा गेस रियल मैड्रिड मेरे दो पिक्स तो यही है, PSG एंड मैन सिटी. दोनों में स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है एंड द साइनिंग्स दैट दे हैव डन थ्रू आउट द सीजन. मैन या सिटी ने तो पूरा या मैनचेस्टर सिटी एक्चुअली एंड ग्वार्डियोला इज आल्सो देयर मेरा एक बोल्ड चीज है मेरे को लगता है ना एक नॉन यूरोपियन क्लब विल हैव अ गुड रन एंड obviously your first thought goes to a Saudi club in Al Hilal or someone because उनके पास वैसे players भी है right like you have Simone Inzaghi as your coach they might ठीक है they cannot register any more players but they still have a certain quality of players that is there they've signed from Europe so first thought goes to Al Hilal but uh, this is yeah I somewhere I need my time to think but somewhere I feel there will be a non-European club that will do a have a decent tournament ऐसा मेरा feeling है but let's get to the comment obviously the first game I just wanted to show that why did I just wanted to show the initial schedule um, yeah, Messi is playing the first game. yeah of course I mean वो इंटर मायामी को लोग ने टूर्नामेंट में लाने के लिए जो shenanigans किए वो मैं समझाऊंगा ना तेरे को एक मिनट में समझाता हूँ so your first game is Al Ahly of Egypt versus Inter Miami at 5:30 a.m. if I sleep early then I might get up for this just for the love of the sport फिर थोड़ा अच्छे टाइमिंग्स है इसलिए ईस्ट कोस्ट पे बायर्न वर्सेस ऑकलैंड सिटी पीएसजी एटलेटी है आपका इंटर का तो यार इंटर का गेम साला 6:30 को किक ऑफ है यार मैं तेरे को दिखाता हूँ यार ऑफिस डे पे यार लाइक दिस इज नॉट फेयर लाइक मॉन्टेरे वर्सेस इंटर ऑन अ वेडनेसडे एट 6:30 a.m. man like this is going to be so hard to I'll manage but this is going to be difficult
ये रियल मैड्रिड यूवेंटस का गेम अलेन के साथ भी सुबह 6:30 को है योगेश। और बाद में इंटर का एक गेम है रात को, बढ़िया। बट योगेश, योर प्रेडिक्शन इज पीएसजी और मैन सिटी, राइट, टू विन इट? Yeah, yeah. What do you guys in the comments think? I'm just going to take the last comments and close this now, Yogesh. Thank you guys everyone for commenting. Thank you Yogesh for joining. I know it's been long, but I think we needed this stream of sorts. It's been a while. Let me just take a few comments and I'll close this. Kivior is goated. So yeah, have faith in Calafiori also is all I'm saying. वो मेरा हेयरलाइन वो तो है अभी, वो तो बहुत टाइम से रहा है भाई, अभी तो ये गोरान पांडेव कंपैरिजन नॉर्मल हो गए। सो नापोली का क्या लिया था तूने? ले ले फिर से पुल अप करो। क्या क्या? तूने नापोली का कोई तो कमेंट पुल अप किया था ना अभी? नहीं नहीं. तूने नहीं किया था? आई एम एनीवेज गोइंग थ्रू कमेंट्स, आई पुल दैट अप। he is part of the club world cup squad. I answered this. He is part of it. वो कि बीसेक जैसा प्लेयर भी होता है। हाँ देख, लुक, ही इज ग्रेट। ये इफ बीसेक फिक्सेस पोजिशनल प्ले देन आई डोंट माइंड। या फेयर इनफ। इटली शुड मूव टू ओशनिया और समथिंग। दिस इज हिलेरियस। उसमें भी क्वालीफाई नहीं होएगा, उसमें भी नहीं होगा। सोलोमन आइलैंड्स कैसे तो 1-0 करके हरा देगा और फिर न्यूजीलैंड डंक करेगा इटली पे। इटली का कल्याण चौबे कौन है? ग्रवीना, गब्रिएले ग्रवीना, सिंपल एज दैट। Yeah, that's definitely the New Caledonia से भी हार के। What do you think of UA going with Tudor? I think simply put safe choice है। कॉन्टे चाहिए था, नहीं मिला। मार्को सिल्वा से तो बेटर चॉइस है। Retaining a guy who knows the club, simple as that. Yogesh, I think we can agree that's important. Sort of getting Yeah. a guy who does not know anything about the club. हम्म. I think बस Lea एक will हो be गया कि नॉन इटालियन कोचेस यूवेंटस के फिलोसफी के साथ में, एटलीस्ट हाँ। हिस्टोरिक फिलोसफी के साथ में बैठते नहीं है. That's fair. That's fair. Also, Tudor has is not the Tudor का एक पोटेंशियल था जो ही इज नॉट लिव्ड अप टू। एक टाइम पे ना टूडोर से बहुत एक्सपेक्टेशंस थे एंड ही इज नॉट लिव्ड अप टू इट। एंड उसका ना पहले हमेशा फोकस रहता है मैं टीम से निकालू किसको। वो उसके हमेशा जब भी वो जहाँ भी चाहे तो फेमस मीम बन गया ना कि वो पहले लिस्ट बनाता है 6 से 8 प्लेयर की, मैं इसको बाहर करना है पहले। लाइक गुएंडोजी को तो उसको गुएंडोजी तो जरा भी पसंद नहीं था उसको। ठीक है, गुएंडोजी इट्स नॉट लाइक ही इज अ सेंट और एनी, बट यू गेट द पॉइंट। I would sign Yeah. Mark Casado for Liverpool if I was Michael Edwards. That's a good shout, Satwik. I think Leo should leave AC Milan. It will be good for both parties. Can't think he will improve under AC Allegri. Sorry, fair enough. Um, yeah, that's a good point there, Ashwin. Yeah, I think that's the case. मेरे को याद करना पड़ेगा. Fuck. Johan Cruyff, why Italian clubs don't try to sign other league coaches? They will bring various play styles. ये योगेश यही बोल रहा है ना कि Italians have to be a bit more bold. बट फनी चीज भी यही है ना योगेश की फॉरेनर्स हैव अ शिट, नॉट अ शिट बट अ बैड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ विनिंग द Yeah, yeah, लीग। yeah. वही मतलब मैं अभी सोच के वही बैठा हूँ कि इधर कीवो इज रोमानियन, तो वेंचर क्या अभी हम लोग लीग नहीं जीत सकते। फॉरेनर्स डू नॉट हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ विनिंग द लीग इन इटली, दैट्स द फनी पार्ट। बट एक फनी चीज है, एक दिन ना ऐसा एक सीजन ऐसा होना चाहिए ना योगेश, जब फॉर सम रीजन वी शुड हैव लाइक एटलीस्ट 15 to 16 फॉरेनर्स इन द लीग। बहुत कुछ कॉमेडी होनी चाहिए और जो भी इटालियंस है ना सब बॉटम टेबल टीम्स में ही होने चाहिए। फिर फाइनली कोई फॉरेनर जीतेगा लीग, मतलब बहुत टाइम के बाद। ऑब्वियसली द लास्ट टाइम अ फॉरेनर वन द लीग वाज, या दैट हैज टू बी Mourinho ही होगा मुझे लगता yeah, Mourinho, as because between उसके बाद कोई नहीं जीता। So you understand your Cruyff, Mourinho is the last foreigner to win the Serie A। 16 साल 15-16 साल। और अलेग्री, ये अगर तुम स्टार्ट के हिसाब से जाओगे ना तो कॉन्टे और अलेग्री मस्ट बी लिकिंग देयर लिप्स, क्या भाई हम दोनों इटालियन है, बाकी कोई इटालियन है नहीं टॉप क्लब्स में गैस्परिनी को छोड़ के। एंड बाय द वे सॉरी योगेश, आई थिंक before I just take the last है. comments Yeah, and yeah, close, we did not touch upon Gasperini. exactly, we have to touch on that. I mean, sorry, this stream is going long, but Gasperini, Yogesh, let's talk about it. जब उसके before he officially signed, when the links were there, Roma Ultras were like, don't get this guy to the club because वो है controversial figure है, अपन सब जानते हो, नापोली के बारे में बहुत गंदी चीजें बोल चुका है, नेपल्स के लोग। But Juventus tried to hijack the move, if you remember. We didn't touch upon that. They Yeah, yeah. failed. Gasperini kept his word to Roma, and Roma is suddenly in a position, Yogesh, if they retain those X amount of players, Deadwood, Nikale, and they can sign players, do you consider them? Because दूसरे clubs are chaos. What are you expecting of Roma? Gasperini is here now. क्या बोलता है तू? गैस्पेरिनी थोड़ा सा वोलेटाइल फिगर है. हम्म, फर्स्ट सीजन उसका देखना पड़ेगा हमें, लाइक हाउ ही जेल्स विद द एनवायरनमेंट एज वेल. लाइक
दोनों एक्सप्लोसिव है यार, एनवायरनमेंट भी और गैस्परिनी हिमसेल्फ। तो हाँ मैच कैसे बैठता है विद द प्लेयर्स स्पेशली। तो एक्सपेक्टेशंस तो काफी बढ़ गए हैं, लाइक फ्रॉम रोमा, लाइक लास्ट सीजन में रोमा से टॉप 4 चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड था। दे हैड एन अमेजिंग रन when Ranieri came in, right? They या almost qualified for Champions League after having such a disaster start to the season. या But काफी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगे, आई एम नॉट श्योर, बट आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट टॉप 3 फिनिश फ्रॉम रोमा दिस सीजन, कमिंग एज सीजन। यू फेयर इनफ ऑल्सो आई नो यस प्लेयर्स लाना है जैसे तुमने बोला फिर से वो अडेप्टेशन पीरियड गैस्पेरिनी is getting out of his comfort zone after 9 years. So या as equally as much it will affect Atalanta जिसने इवान यूरिच को लाया जो क्वेश्चन मार्क्स रेस करता है एंड but it also will have some I want to see I'm curious to see I don't know what to think because I can we can sit here and make predictions right योगेश but मैं इधर curious हूँ कि 9 years he's left his home. What will या he do now? At least he stayed in Italy, so I think he will do a good job. I think वो दूसरों के सिचुएशन पे कैपिटलाइज करेगा. Atalanta भी आई एम क्यूरियस व्हाट हैपेंस इवन तेरे को पता है मैं ना कि मेरे फ्रेंड्स को पहले बोलता था गैस्पेरिनी का जब इवान यूरिच जब अच्छा कोच था ना हेल्लास वेरोना ये सब में टोरिनो में तब मैं हमेशा बोलता था गैस्पेरिनी सक्सेसर शुड बी इवान यूरिच एट दैट टाइम बट बीच में रोम और ये साउथहैम्पटन जाके उसका थोड़ा अफेक्ट हो गया है बट इफ ही कैन स्टिल गेट हिज बेरिंग्स राइट अगेन that's another interesting dynamic. और एक चीज योगेश I'm surprised no club went for Palladino. I think Parma is trying. बट मैं या बोलता था कि अगर इंटर तुम क्रिश्चियन की वो को ही ला रहे हो जो इनएक्सपीरियंस यू माइट एज वेल हैव गॉन फॉर पालाडिनो जो 3-5-2 खेलता है राइट ही इज अ गुड कोच देयर सो अगेन फॉरगेट द डायनामिक्स बट रोमा योगेश रोमा हैज टू बी टेकन सीरियसली स्पेशली तू देख बेक Gasperini three at the back तेरा खेल लेगा. He's going to try to bring in a champion mentality. Now he's won the Europa League. He's qualified for Champions League consistently. वो क्यों छोड़ा Atalanta? He उसका एक ईयर बचा था. Let's remember he left because उसको guarantees नहीं मिले. उसने openly बोला है ये. After leaving Atalanta, he did not feel assured by the project anymore. And he sees that assurance in Rome. Rome is a bigger club to handle. Can he? तूने बराबर क्वेश्चन पूछा. Can he handle now that bigger club in the sense that Rome, the city of Rome, Roma as a club is always more in the spotlight. तू पता है उधर या कितने कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं रोमा में कितने थिंग्स हेवायर जाते हैं जो डेरोसी के साथ हुआ कैन ही हैंडल ऑल दिस नाउ he's made a club like Atalanta from the ground but now he's at a club which is already there in the limelight you get the point can he do this I feel he will but and I feel he absolutely has to take this chance to get Roma back into the Champions League there is no excuses even if it's his first season मेरे को ऐसा लगता है and I think या both of us are in agreement here but that thank you for bringing that up I've completely like I know we need Ajay Bhai for this या but yeah Openda is in the market who needs just for anyone is fair enough कुबरसी नापोली सर सेरिया कुबरसी नापोली ये बारसा वाला वो बोल रहा है पेद्री मिलान कसाडो इंटर वो जी किसी ने पूछा था इस पियो एस्पोजिटो फर्स्ट टीम लेवल स्वयं एक चीज मैं बोलूंगा आई डोंट नो इट्स समथिंग यू रिमेन्स टू बी सीन पर अगर आप बॉनी जैसे प्लेयर को चांस दे खरीद रहे हो जिसने सेरिया में कुछ 5-6 गोल मारे एंड ही इज प्लेड इन द सेरिया Pio Esposito has to be considered. You have to give Italian youth a chance, Yogesh. I think this is the problem with Italy, right? बहुत या late launch करते हैं. और स्वयं this is the best chance. Kivu is the coach. He's coached 5 levels or 6 levels of Inter Primavera. He will integrate more youth. You have to do this. अगर आप bet कर रहे हो youngsters पे इंटर की पॉलिसी चेंज हो रही you get Pio Esposito is my opinion. You have to play the kid. इंटर विल मोस्ट प्रोबब्ली फेस मैन सिटी इन क्वार्टर फाइनल्स देखते हैं पहले टूर्नामेंट चालू तो होने दो हाँ वो फनी चीज है कि उसने बेसिकली हमारा स्टाफ है ना योगेश सब कोलारोव को भी लेके आया। हाँ कॉलर ऑफ आ गया असिस्टेंट कोच बन गया एक तो ही वाज एन इंटर प्लेयर एंड ही वाज गुड फॉर द ड्रेसिंग रूम बट they got one assistant coach from the treble winning season वॉल्टर सैमुअल को लाने वाले थे जो treble winner था but he decided to stay with Argentina so पूरा बैंड असेस मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं खुश हूँ कि कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मतलब आर दे ट्राइंग टू गेट लाइक सम बैंड टुगेदर और आर दे मुझे समझ में नहीं आ रहा इसलिए बहुत कंफ्यूज हूँ मैं ठीक है कीवू लाया बट मतलब just don't get anybody for the sake of it also right मतलब you get the point right you get proper professionals एंड all ये around सब प्लेयर्स का लेगेसी है यार, अच्छा नहीं जाएगा तो फालतू का, जैसे मिलान ने किया, सीडॉर्फ का yeah लेगेसी खराब किया, गटुसो का खराब किया, कितने कितने अपने एक्स प्लेयर्स का लेगेसी खराब किया मिलान ने।
तो या एंड ऐसा सी नहीं करना चाहिए यार। I agree. See, जो भी coaches ये लोग ला रहे, they are already coaches and all. Even Kolarov, actually, when he was at Inter, na, he was very good for the dressing room, and he is just coaching Serbia's youth team. But again, even Kolarov is inexperienced in coaching. He's had some weird attempts at being a director, which has not worked out. So मैं बोल रहा हूँ कि जब आप staff लाते हो ना, अब एक प्लान के साथ लो, मतलब किसी को भी मत लाओ. Like there should not be panic. I understand Kivu को लाया तो थोड़ा पैनिक इसलिए. यूजुअली जब अपन साइन करते हैं ना योगेश, जब अपन कोच लेते हैं तो अपन सोचते नहीं ना कि हाँ असिस्टेंट मैनेजर कौन है, जो भी है अपन वी एक्सेप्ट इट राइट, बिकॉज दैट्स हु द कोच हम्म चूजेस. अभी हम्म। इंटर में ऐसा एटमोस्फेयर हो गया ना कि बिकॉज एन इनएक्सपीरियंस कोच लाइक कीवो हैज कम इन, फैंस आर पैनिकिंग, अरे असिस्टेंट कौन है, उसका असिस्टेंट कौन है, गोलकीपर कोच कौन है, यू नो देयर इज दैट पैनिक. यस द गोलकीपर कोच इज द सेम, बट द पॉइंट इज Yeah, वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैनिक हो गया है थोड़ा इंटर में. ये भी ले लिया मैंने सब. टाइम टू ब्रिंग बैक अनदर एक्स सीरीज स्ट्राइकर हु इज करेंटली प्लेइंग इन टर्की. exactly. या यूवेंटस को कोई भी अच्छे प्लेयर से लिंक कर दो. या दिस इज योगेश, ये डेवलपमेंट तो अपने को देखना पड़ेगा बिकॉज इट्स अर्ली, बट यूवेंटस आल्सो हैव टू गेट अ मूव ऑन. ये हमने कर दिया क्रिस्टियानो, वी हैव टेक गिवन ऑल योर प्रेडिक्शंस, took this as well. Not good. I mean, Pioli at that point was not that good. Also, just one thing with Pioli, Abhijay, Yogesh, ये ना थोड़ा भूल जाते लोग. Pioli got Lazio to the Champions League once by finishing third. So he's a decent coach here at the end of the day. Um, मुझे लग रहा है after 2 years Inzaghi can be a manager of Arsenal and Man City. Fair prediction, but एक चीज बोलूंगा ना, Simone Inzaghi takes the language aspect very seriously and he does not know English at all. Yes, he's gone to Al Hilal, but he has like 2 translators or something over there. उसको इंग्लिश जरा भी नहीं आती है and he takes it very seriously. उसने इसीलिए पहले प्रीमियर लीग ऑफर्स को थोड़ा टर्न डाउन भी किया है. तो उसको इंग्लिश जरा भी नहीं आती, उसके फैमिली में भी किसी को नहीं आता है and he takes it very seriously. As that he's gone to Al Hilal, yes, but he has like 2 translators over there. So yeah, that has to be arranged and he has to start learning the language if he wants to go there. यार Paladino. इटालियन से अरेबिक ट्रांसलेटर्स बहुत हाँ वो होने वाला है, वो मैं देखना चाहता हूँ कैसे जाता है. बट he's gone to Al Hilal. The club gets the most backed in Saudi Arabia, so he should be fine. Why doesn't FIGC consider Paladino or Ajax's recent manager Farioli? हाँ, that's a good question. देख भाई, FIGC के बारे में कम ही बात करें तो अच्छा है सिद्धांत. रुक मैं जस्ट लास्ट कमेंट्स ले रहा हूँ. पियोली जैसे सिमोने इंजागी भी कर लेता तो बड़ा मजेदार होगा. आई थिंक इटली को रिजेक्ट करना है, गेस यू मीन. आई थिंक वी आर गोइंग टू यूज दिस एज अ टेस्टिंग ग्राउंड. दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग. वी आर ट्राइंग टू व्हाट फाइंड प्लेयर्स सूट इज. या एग्जैक्टली, बट वी स्टिल हैव टू ट्राई टू डू वेल इन माय ओपिनियन. नहीं है भाई ना, वो योगेश एंजॉय करेगा. मैं भी सीक्रेटली थोड़ा होप कर रहा था. आई डोंट थिंक इट वुड हैव मेड सेंस उतना, बट आई वाज सीक्रेटली होपिंग कि एक बड़ा प्लेयर और आ जाए बिकॉज या बट नहीं यार, नापोली फैन शुड बी वेरी हैप्पी. लाइक ऑनेस्टली, लाइक इट्स अ ग्रेट. स्टिल आई फील ही हैज समथिंग टू गिव. नॉर्वे डिस्ट्रॉयड इटली. यही पर सीजन होगा. व्हाट्स द नीड ऑफ अनदर प्री सीजन. हाँ मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट द क्लब वर्ल्ड कप. Imagine Conte versus Enrique or Flick. Even company will thrash Conte. ये देख, Anad is obviously trolling as well, but यही चीज है योगेश. He has to put his ghosts behind this season. There's no यही प्री सीजन होगा. And योगेश, finally you guys are back in the Champions League after a drought. You want to do well in the Champions League. It is the competition where देख स्पलेटी तुम लोग के साथ हिस्ट्री क्रिएट किया था, फर्स्ट एवर क्वार्टर फाइनल्स. तब तुझे फीलिंग आई होगी ना अंदर से कि भाई हम लोग हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं. यू आर फेसिंग एसी मिलान एट दैट टाइम एंड आई एम श्योर यू गाइस वुड हैव बिलीव्ड कि या वी कुड हैव yeah. गॉन द डिस्टेंस एंड नेवर नो. So Champions League is that competition where Conte better turn it around for you guys. River Plate winning it just Swarnim by Shivam will be happy if that happens. PSG versus Inter redemption. भाई उधर फिर से मार नहीं खाना है मेरे को. Mamelodi Sundowns winning it from South Africa. मार्से भाई वो क्लब के बारे में कम बात करें, मेरे लिए अच्छा है. Al Hilal will finish second in their group. Fair enough. River Plate will do decent. Yeah, that's fair prediction. Al Hilal to smash Real Madrid. भाई अब लोग थोड़ा क्या, मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि आई प्रेडिक्ट वन नॉन यूरोपियन क्लब टू डू वेल, तो ये हो रहा है. कितने बार, अरे भाई आई टुक दैट कमेंट क्रिशन, वही कमेंट्स मत करो यार. पीएसजी सिटी एंड मड्रिड फॉर मी. फेयर इनफ. अल हिलाल विल विन इट ऑल विद सिमोने इंजागी. भाई अगर सिमोने इंजागी ये जीत गया ना तो भाई बुरा लगेगा देख के. No, but I wish him all the success anyways. Mourinho से पहले एरिक्सन होगा, I think. Wait, what? सरिया जीतने वाला. Yeah, Serie A जीतने वाला. Svenny और एरिक्सन ना, नहीं. That's a good one. Mourinho के बीच अपने पास
मोरिनियो के पहले कौन था? रोबोटो मांसिनी था 3 सीजन He's talking इंटर about for he's yeah foreign coaches. Yeah, he's talking about foreign coach wala thing. कोचेस ना. Yeah, that's a उसके good. पहले तो कैल्सियोपोली हो गया था 2 सीजन. हाँ, Milan. एंसेलोटी था. Yeah, Milan and all were. That's when UA. Yeah, it has to be Ericsson. Gasperini, good manager, horrible human being. Great shout on Palladino for Inter. शावी साइन कर लो भाई, वो टीम सुधर लेगा और अच्छा खासा अकेडमी प्लेयर भी निकाल लेगा. शावी के मेरे डाउट्स है, बट आई फील yeah, any club can also try to take a gamble on him. By the way, nice to have you. Atalanta is love in the chat. Up, please comment. We are closing the stream, but please let us know what you think about the Juric appointment. Yeah, please let us know because we want to hear it from an Atalanta fan also. Inzaghi will be Juventus. ये मेरे को ये मेरा भी predict ये ना हमारे इंटर की कम्युनिटी थोड़ी फनी है हमारी कि हम लोग ना बुरी चीजें सोचना चालू करते हैं योगेश. तो हमारा मोस्टली ना फैन बेस में यही प्रिडिक्शन है, ये अनिलाल के 2 साल कंप्लीट करेगा एंड फॉर सम रीजन कहीं ना कहीं कोई राइवल की वैकेंसी होगी, यूवेंटस, एसी मिलान या फिर इटली जॉब की. मेरा प्रिडिक्शन है या ये इधर इटली का नेक्स्ट कोच बनेगा या यूवेंटस का नेक्स्ट कोच बनेगा. लिख के ले ले, सिमोने इंजागी. और ये इटली में होता ही होगा, तू जानता है. कॉन्टे इज द प्राइम एग्जांपल. वो इटली का पूरा टूर कर चुका है. वो यूवेंटस के बाद इंटर गया है, फिर अभी तुम लोग के पास है. यू नेवर नो, फिर कहीं और चला जाएगा क्योंकि इटली में उसको हमेशा जॉब मिलने के चांसेस अच्छे हैं. यस यस. तो बढ़िया. लास्ट कमेंट गई सात्विक सेज फाइनल से पहले डेजर्बी को चांस देना चाहिए इन पेकिंग ऑर्डर. डेजर्बी डेजर्बी का स्टाइल ऑफ फुटबॉल योगेश ना बहुत रिस्की है, राइट. Like he just does not is care for defense is so risky. I don't know, but it's a fair shout, Satwik. Juric has worked with Atalanta SD in the past at Hellas. Yes, he has. He has. Good appointment. Juric is closest to guess. मैं वही बोला ना विजय. Few years ago, you minus that Southampton spell, and you minus the Roma spell, and just before the Torino spell, he was actually a good coach, and he was my first choice to replace Gasperini at that point. But it didn't happen. I feel there is something there, but let's see. क्या बोलते हैं योगेश? You think yes or no में simply Juric is going to recover from all this setbacks he's had in his career? You think because tactically they have the setup for him. If you think about it, Atalanta plays like that. But do you think he can command the club like Gasperini? Do you think he can draw the names? Do you think he can do a good job at Atalanta? आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा यार. गैस्परिनी का जाना इज अ बिग शॉक फॉर देम. थोड़ा टाइम Yeah, लगेगा. fair enough. So I think I have taken all the comments. मैंने दो चीज. तेरे को क्या लगता है ये सिंपली बस ये आंसर कर. आई डोंट नो इफ जक्सीर इज स्टिल इन द चैट, बट उसके लिए मैं ये आंसर तो करना ही चाहता हूँ. या ये क्वेश्चन मुझे भी आया था कि De Bruyne एंड मैकटोमिने साथ में कैसे खेलेंगे, थोड़े लाइक बोथ लाइक गोइंग फॉरवर्ड. हाँ. तो आई एम नॉट श्योर बट I don't think so. I don't think so. Like he'll be more goal worthy, like goal creating, goal scoring chances और मिलेंगे McTominay को. It's not like कि वो reduce होंगे with KDB coming in. फेयर प्ले, फेयर प्ले. ये नेक्स्ट एक स्टार्ट कमेंट है. ये तो ले लिया था, सॉरी मैंने, ये हमने डिस्कस किया कृष्ण इंटरव्यू के और हमने प्रिडिक्शंस भी दे दिए थे क्या है. सो लास्ट कमेंट्स कम इन. अटलांटा कंफर्म्ड कुसुनो गुड साइनिंग. आई एग्री. Did he? I'm sure he didn't say it like this because मैं अभी ट्विटर देख नहीं रहा हूँ. तो I'm sure. Can you send me a link or something? This thing for what he exactly said, another, because मैं भी देख रहा हूँ because I'm pretty sure उसने directly नहीं देखा होगा. But obviously Yogesh, this is just one more thing. Um, कि Tijani Reinders, Milan's best player, one of Milan's best players, if not the best, just gone. Manchester City and Yeah. Yeah. obviously बेचना ले आओ था, but ये गया 55 million plus bonuses में. Not a good look, not a good look at all, because he was really good for AC Milan और एक player who they did good. क्या बोलता है इसके बारे में तू? Definitely, like even the like nightmare season जो मिलान का रहा है, he was हाँ. one of the best brightest spot यार. तो like Reinders as a player भी अगर like मुझे भी मिलता था option कि to sign Reinders for my club, I would have gone all in. So Man City has done a very good job in scouting and getting him out, and him saying that AC Milan are not serious, अगर if that's true, then I think Milan have got very big problems. Fair enough. Fair enough. Yeah. Juric will struggle if the players don't stick around. They need to keep the core. I agree. I agree. 40 million, 46 million British pounds is so damn low. यार but AC मिलान का पोजीशन भी वही हो गया था ना योगेश. चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं, नेगोशिएट Hmm. करना आसान हो जाता है प्लेयर को निकालना.
But yeah, guys, हम्म। I think that was it for comments. If anybody has any last comments, please फटाफट दे दो. हमने ये stream 2 घंटा 20 मिनट जो plan इतना नहीं था, but thank you Yogesh for coming in. Any closing thoughts you want to give? No, yeah, exciting times. I guess I hope there are a As a lot Napoli many fan, definitely. बोल there are a बोल lot बोल. more Napoli fans या फिर fans who want Napoli to do well just because of Kevin De Bruyne या फिर Napoli को as a second team watch कर रहे हैं. So I hope to meet a lot more new people following Hmm. and like what Napoli do. Fair enough. Fair enough. नहीं, I agree with you. थोड़ा थोड़ा interesting times as interesting intriguing times है मेरे लिए. मैं बोलूँगा I have to be skeptical as an interista, but intriguing times तो है. As always मैं एक ही चीज़ बोलूँगा. देखो, आप लोग के लिए हम कंटेंट लाते रहेंगे. Yes, there has been a bit of a gap because all of us have been very busy recently with something or the other. But we try our best to bring content. We have a lot of plans in the work. We will be meeting very soon as a panel discussing all of this. Lot of things in the pipeline. Content आता रहेगा, वो आप टेंशन मत लो. We will be covering many more things. We have a few videos. क्वालियरेला का वीडियो थोड़ा एडिटर की वजह से डिले, नॉट एडिटर की वजह से बट थोड़ा इश्यूज थे एडिटिंग में, तो वो फिक्स होके अभी आ जाएगा. देर आर मोर वीडियोज इन द पाइपलाइन. वी विल बी डूइंग आवर एंड ऑफ द सीजन अवार्ड्स वेरी सुन, जिसके लिए पूरा पैनल रहेगा. योगेश, यू बेटर बी देयर. वो करना है अपने को एंड ऑफ द सीजन अवार्ड्स. तेरे को तेरी पूरी टीम ऑफ द सीजन में नापोली प्लेयर्स भरने, वो भी चलेगा मेरे को, बट यू बेटर बी देयर. And I can only thank all of you guys for joining in as always. Please do like, share, and subscribe. Please support karo. We are very close to 2K. Like, come on, guys, let's get there. Let's hit another milestone in this journey. Is all I can say. Let's grow together. Let's spread the word of Italian football. ब्रॉडकास्टर पे क्या न्यूज आएगी नेक्स्ट सीजन के लिए, वो तो अब आपको अभी से ही अपडेट करना चालू कर देंगे वंस यू नो, बिकॉज आई डोंट थिंक जीएक्सआर इज गोइंग टू बी द ब्रॉडकास्टर. योगेश, Yeah, इट्स yeah. गोइंग टू बी समवन एल्स, एक ऐसा बार लग रहा अनइंस्टॉल कर दिया मैंने जिस दिन खत्म है. हुआ उसी दिन अनइंस्टॉल किया। वो जाने वाले हैं वैसे भी, बट आई होप वी हैव न्यूज ऑन दैट फ्रंट सून. यार ये सब पे जोक वोक मत करो. आई नो ये है, बट आई जस्ट होप फॉर हिज सेफ्टी. ये सब पे जोक वोक मत करो यार. नुनो टवारेस 40 मिलियन प्राइस टैग सेट बाय लाजियो 40%. वो नहीं, आई थिंक ही विल स्टे. द ग्रेट स्ट्राइकर नूनियस, हाँ ये नूनियस के लिंक्स है भाई. मतलब वो नापोली फैंस तो भाई, नापोली फैंस, लिवरपूल फैंस would be happy if you paid a good fee for him. That's all. Please buy him someone. ये तो डूनो टावारेस का बोल रहा है यार. खूब मैंने सोच रहा होगा he should have gone to Liverpool when they wanted him. Seeing Rangers, he has gone back. हाँ बराबर है, पर एक पॉइंट पे मैंने सोच रहा होगा भाई, मैं वो मोटा प्रोजेक्ट के लिए आया. अब मैं हूँ Yeah, जो भी हूँ, बट यार लेट्स सी विद ईगो टूडोर यार. यू कैन नॉट रूल आउट देम डूइंग अ गुड जॉब, बट यस, Juventus have a lot of serious reflection to do, and I'm sure Juventini will agree with that. Thank you, Satvik. I appreciate again all the support you guys have given us. Sorry if I've left out any comments. So so many comments. It does happen. Membership also, we have finally kind of worked out a plan. So sab aayega. Just be patient with us. We'll be back on track. We'll have planned a lot of collabs. We planned a lot. It's just that वो कभी कभी timing की वजह से, योगेश, as you can understand, all of us something or the other comes, so it doesn't happen. But we definitely will be executing things. So we can only request for you guys to support us, and let's get to 2K, guys. Let's get this done. Yeah, I hope ये दोनों में से रहेगा. I absolutely don't mind. yeah, Fan yeah. code is also reasonable. देखो भाई, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ योगेश, before we thank you कृषानु पहले for the kind words, good stream. He says पेड अगर कोई प्लेटफॉर्म पे गया ना, that's because you're getting a certain level of service, a quality, right? I know we Yeah. all love free things, Yogesh. We all love free things. बट जीएक्सआर का प्राइम एग्जाम्पल निकला. बहुत एम्बिशंस फ्री में दिया, और वी सॉ हाउ इट फेल अपार्ट विद टेरेबल ब्रॉडकास्ट. हॉरिबल. तू देखा ही योगेश स्ट्रीम में कैसे ब्लर होता था. वी वी शुड ऑनेस्टली वी नीड अ प्लेटफॉर्म दैट विल गारंटी स्टेबिलिटी. तो थोड़ा पैसा भरना पड़ेगा. तो आप लोग रेडी हो जाओ मेंटली एज फैंस, गियर अप. बिकॉज मैं तो सोच रहा हूँ सोनी वापस ले ले तो सबसे बेस्ट हो गया। सोनी इज गुड. द ओनली प्रॉब्लम इज द ओवर प्राइस. अगर वो ओवर प्राइस नहीं होता ना योगेश थोड़ा, तो Yeah. तो भी ठीक है, जो भी ले ले. मैं बस बोलना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को कि एज वील ऑब्वियसली कीप यू गाइज अपडेटेड, बट इफ देयर इज अ प्राइस टू बी पेड, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन क्वालिटी दैट इज बीइंग ऑफर्ड. आप लोग ने जीएक्सआर का देख लिया, फ्री में मिला, आपने देखा आपको क्या था हुआ. लालीगा के साथ भी आपने देख लिया क्या हुआ, राइट? एल क्लासिको के वीकेंड पे क्रैश हो गया. और एक हफ्ता ब्रॉडकास्ट ही नहीं हुआ गेम में. सो भाई हर फ्री चीज ना अच्छी नहीं होती. If there is a certain price to pay, it has to be done. We will let you know once we have an update if there is another broadcaster.
fingers crossed, Yogesh, we have a better broadcaster. That's all I will say. Yeah. Krishanu, just DM us on Insta. I mean, कभी भी ऐसा कोई time नहीं है. We'll reply to you at the earliest. That's all I can say. Now, अगर आप अभी DM करोगे तो अभी तो मैं एकदम से ना reply करूँ, but tomorrow if you DM or if you DM now also I'll reply tomorrow. That's or one of us will reply tomorrow, Yogesh or anyone. Hotstar पे गया तो it'll bring more Indians. हाँ, ये अच्छा point है. यस यस। Yeah. एंड अभी तो जियो हॉटस्टार हो गया, तो हाँ, भोजपुरी, जियो स्टार. मराठी, तेलुगु सब लैंग्वेजेस में भी आएगा। वो जियो स्टार का एक तो लोगो जो है ना भाई, लोग क्या ट्रोल किया ना उसका. ऐसे लोग बोलते हैं वो फ्री पिक से उठाया है कैनवा पे. तेरे को पता है, तू पीपीटी का भी खोलेगा ना, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी, उसमें ना शेप्स जो होता है ना, शेप्स योगेश, उसमें वो एग्जैक्ट स्टार का शेप, एग्जैक्ट नहीं बट है, तो वो स्टार का शेप इंसर्ट करेगा ना, जो जियो स्टार का लोगो है उसको थोड़ा ड्रैग करेगा ना, उसको इलोंगेट करेगा तो तेरे को जियो स्टार का लोगो मिल जाता है. लिटरली वो तू लोगो पीपीटी पे रेडी कर सकता है इन 2 मिनट्स. तेरे को खींचना है, तेरे को कलर चेंज करना है, थोड़े इफेक्ट्स डालने हैं, दैट्स इट. दैट्स जियोस्टार्स लोगो रेडी फॉर यू. Yeah, I would also watch paid streams. Yeah, exactly. योगेश, लोग ये भूलते हैं यूरोप में ना इनको 10 अलग सब्सक्रिप्शन खरीद करके डबल प्राइस देना पड़ता है. या It's या not that या bad in India actually. Yeah, I agree. बट बहुत लकी है यूके में, तो लूट रहे. एग्जैक्टली. अब 3-4 ब्रॉडकास्टर करते हैं, ऊपर से पाउंड 80 आपको देखने नहीं मिलता. So, but Yogesh, I think we'll close this. Harsha, you've joined very late, but thank you for joining. Is all I can say. Please do go back and watch the stream. We are just closing it. देख लो आप, स्ट्रीम थोड़ी लंबी है, but we've discussed a lot about the Calciomercato. But yeah, फैन कोड भी ले ले तो नो प्रॉब्लम. उनके प्राइसेस बहुत रीजनेबल होते हैं योगेश. एक मैच तो 20 रुपए का, अगर पास भी हुआ तो 200 रुपए, 500 रुपए का तो पास होता है यार. आई मीन इट्स वर्थ इट ऑल्सो. एंड आई होप दे गेट कोपा इटालिया, सुपर कोपा, सब ले लो भाई. इटली का सब ले लो, उठा लो, सब ले लो. ले रहे हो तो बचा लो भाई, जो भी ले रहा है ना सब ले लो, तीनों ले लो प्लीज. हम लोग कर लेंगे. एंड बट या गाइस, योगेश, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से बिफोर आई क्लोज दिस? एनीथिंग? नो यार, दैट इज इट। काफी मजा आया आज बात करके। हाँ, नहीं नहीं, बहुत मजा आया. थैंक यू योगेश सो मच फॉर ज्वाइनिंग इट. आई ज्वाइनिंग द स्ट्रीम. आई अप्रिशिएट इट. एंड थैंक you as always guys for supporting us. Keep supporting us. And yeah, we will come back to you with more content. आता रहेगा. We are doing a proper meetup and proper planning as well. End of the season awards is our next goal. And proper करेंगे जैसे last year किया था, team building, player of the season, ये वो categories के साथ. So do stay tuned, and as always, please spread the love. Thank you, and we'll see you very soon. Ciao ciao.